एक सेकंड भाई। भाई अभी तो स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई थी, तुम सब कैसे आके चैट में क्या हैंगो का स्टार्ट कर। अरे यार किसने स्पिन किस पे स्पिन मारू पर एक साथ। अरे सुशिंग भाई तुमको स्पिन करना है। सुशिंग भाई प्रभव को पानी पीना है। और डॉक्टर भाजी क्या है। अरे मैं पता है मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था, मैं कॉफ़ी पिया था तो मैं इसलिए रुका हुआ था थोड़ी देर तक। Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? भाई लाइक कर दो सातों बंदे। कौन है? ओ प्रभव। हैंगो प्रभव बिच, हाउ आर यू? पाजी देखो डॉग पूरा वुंग फुआंगा है वो। हाँ भाई कहाँ है प्रभव? और निगेश भाई बढ़िया, तू कैसे है? तो कहाँ है भाई आजकल? तुम्हारे पास कौन सा कैरेक्टर है सुशिंग भाई? तुम्हारे पास ये है क्या? सुनो मेरी बात सुनो। नैनी की ना टीम बहुत बेकार है। अगर तुम ये कैरेक्टर निकालना चाहते हो तो मैं बता दूं इसकी टीम बहुत बेकार है। आशिक राजपूत भाई कैसे हो? इसकी टीम बेकार है। तुम इस पे निकाल सकते हो, यंगान निकाल सकते हो। यंगान है। अरे फिर मत निकालो अभी, कहेंगे छोड़ दो तुम। या तो इसका वेपन निकालो यंगान का, अगर तुम्हें निकालना है तो। वरना ये तो बेकार है क्योंकि तुमने इसका टेस्ट नहीं ट्राई किया क्या भाई? इसका तुम टेस्ट देखो एक बार। इसके टेस्ट में तुम देखो तुम्हें कौन से कैरेक्टर चाहिए। ये फुल पायो टीम है। ये जो टीम है ना, ये पायो टीम है। तुम इसमें कोई और टीम यूज़ नहीं कर सकते। ये पायो डीपीएस में काउंट होगा हुटाओ की तरह। ये देखो इसकी टीम देखो। तुम्हें इसके अंदर 3 पायो रखने पड़ेंगे। 3 पायो कैरेक्टर रखने पड़ेंगे तब जाके यूज़ कर सकते हो। सेक्रीफिशिंग सिर्फ फेवर्नियस बो है, मैंने खुद वही कहा है। इसमें ना 4 में से तो 3 पायो तुम्हें यूज़ करने पड़ेंगे तब जाके ये वर्थ इट है ये कैरेक्टर। अदरवाइज तो ये बेकार है। ये पूरा पायो डीपीएस वांगा है भाई। ये डैमेज तुम्हें दे देता है 50k तक का, बट यही है कि सिर्फ पायो है तो तुम्हें सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि तुम बिना पायो के इसको यूज़ नहीं कर सकते। सोचो तुम्हें सिर्फ पायो यूज़ करना है, तुम्हारे पास टीम की कॉम्बिनेशन की कितनी कमी हो जाएगी। मेरी पिंग हाई आ गई है। इस पे तुम्हें ना पूरा का पूरा यूज़ करना पड़ेगा ऐसे में। मतलब तुम्हें 3 पायो यूज़ करने पड़ेंगे। यूज़ में सही एक तरीके से, क्योंकि एक तो बो कैरेक्टर है, दूसरा तुमको फुंग पायो चाहिए। बिल्ड कर सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो। मैंने ये वैसे भी ना मैं सोच रहा हूँ उसका 5 स्टार वेपन निकालने का। हाँ यंगान का 5 स्टार वेपन निकालो तुम। बाकी तुम बैनेट की कॉन्स्टिनेशन निकाल सकते हो और तुम्हारे पास बाबरा है तो उसकी कॉन्स्टिनेशन निकाल सकते हो।
और नैनी है और डाइविंग सो भाई नैनी और ये हमारी यंगान नए कैरेक्टर्स आए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक निकालना है। यंगान तो हम निकाल चुके हैं। तो यंगान की टीम ना बहुत अच्छी है, अगर तुम उसे यूज़ करो तो। अब तो यंगान वर्थ इट हो जाती है तुम्हें कहीं कहीं सिचुएशन के हिसाब से। और ये कहाँ गया प्रभव, कहाँ गया? ऊका शावा मशरूम चोरी कर रहा है भाई, ये नाइस मशरूम चोर। प्रभव चोरी करने आया हमारे वंगड में भाई। प्रभव इज़ अ चोर भाई। तो सुनो, यंगान जो है ना वो यूज़फुल हो जाती है तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से। बट दूसरा कैरेक्टर तुम्हारे भाई वेपन निकालो यार, कॉन्स्टिनेशन निकालने का फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। तुम कॉन्स्टिनेशन निकालोगे 50-50 हारेगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। वो मैं भाई प्रभव कैसी कैसी बात कर रहा है भाई वो। यार बारिश हो रही है यहाँ पे, तो भाई कॉन्स्टिनेशन का फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो तुम भाई देखो जितना हो सके तुमको वही निकालना चाहिए, कैरेक्टर निकालो वही काफ़ी है। अरे यार प्रभव भाई रूम, एक तो प्रभव ना मेरे ऑडियो रूम के चक्कर में क्रैश हो जाता है। Blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather. भाई तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? Quietly now. यू वांट यू वांट माई इंक। Busted. Into the wind. भाई शीट भाई, छी छी प्रभव, छी भाई प्रभव तू ऐसे हरकतें कर रहा है। अरे भाई प्रभव ये चीज अच्छी नहीं है। भाई भाई अभी चादम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कर रहा है करोगे अंडरग्राउंड माइन चेस्ट एंड वहाँ के एनिमो क्यूंगर एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है मैं आता हूँ। आते हैं, मैं एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ। अभी प्रभव थोड़ा सामान मोटा है, उसके बाद मैं आ पाऊंगा तुम्हारे बंगले में, तुमने सुना ही होगा। मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे डेजर्ट पवेलियन ग्राइंड करूंगा भाई। मैं इतना पूरा दिखता हूँ तुझे, एक तो मैं 460 की पिन आ रही है भाई मेरी। प्रभव तू यार, ओ भाई एम मिस हो गया मेरा। मेहनत करके प्रभव को सब इतना बड़ा मीम बना दिया भाई। Quietly now. तू कर क्या रहा है? Gotcha. आजा मैं तेरे पास आऊँ इससे, या मैं डैमेज नहीं बढ़ा अभी तक। हिट डैमेज की वो होती तो दूंगा ना मैं। राइडन शोगन मुझे नहीं छूने देती भाई, इसको छूने देगी यंगान को। हम्म। Huh. Good roll. मैसेंजर वाली वो कौन सी है Maybe भाई? I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. एक मिनट में चेक कर दो मैसेंजर की वो जो 3 स्टार है।
मैं देख, मेरे पास एक 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 मेरे पास है, शार्प शूटर है, वो R5 है मेरे पास। 3 स्टार, 3 स्टार R5। और मेरे पास मेरे पास है, मैसेंजर पड़ी हुई है। R5 नहीं है ना मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास। इसका डोमेन के लिए सामान नहीं है वो, मतलब इसको रिफाइन करने के लिए सामान नहीं है मेरे पास। ये The world remains constant over the centuries, but human life is like the अभी मैं dew ER देखो ना, ER वाला यूज करता हूँ, बाद में उसको चेंज कर passing देंगे। through water, अच्छा, इस डोमेन में क्या transitory. भाई, अभी बिंड नहीं है, बिकेंगे तो कुछ भी। यू बिग एस पर्सन भाई। मैं अभी चाजम भाई, मैं चाजम में कैसा हूँ यार, प्रभाव है ना अभी, उसको थोड़ा सा तुम्हें समझ सकते हो। अच्छा, इसमें मॉन्स्टर कौन सा आ रहा है ये तो बता दे मुझे। तो एनिमो है क्या अपना? There are तो leaves मैं एनिमो कहाँ से around, लाऊंगा फिर? and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. नाउ कैन आई टच? मतलब इजी है अभी तो। तेरा भाई इनको कुत्ते की तरह मारेगा। बस तू ना मेरे पे राइडन के हॉट टिटीज, आई मीन राइडन का इफेक्ट दे दे। आजा आजा आजा, इधर आजा राइडन। मैं स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। मेरा नाम प्रभव नहीं है। ये मैकेनिकल रोबोट से, ये झूठ क्या है मेरे से? मैं उसका बैनेट का अंक चार्ज करो अभी, ठीक है? भाई तो झूठ क्या है मुझसे, मैकेनिकल रोबोट क्या है, मैं उसके हिसाब से कहाँ है तू? नहीं है भाई, ये बैनेट उठा, बैनेट उठा तू, बैनेट कर। Illusion shattered. प्रभव को भाई ये भाई प्रतीक को धोखा दे रहा है प्रभव। Torn to oblivion. अबे मेरे को ना पूरा इंगक्टो नहीं मिल पाया, मुझे कुकी यूज करना पड़ेगा। बैनेट तो यूज करो उसके बाद। Teamwork is teamwork. मजा आ गया, मेरे को ना वो इफेक्ट नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए। There is no escape. मेरा डैमेज नहीं दे पाया नीतम। Inazuma shines eternal. मैं नीतम डैमेज नहीं दे पाया भाई, मजाक सड़के। पता नहीं क्यों नहीं दे पाया, पर नहीं दे पाया। एक तो तूने मुझसे झूठ कहा, देखा नहीं डैमेज दे पाया भाई मेरा वो कैरेक्टर। हम्म बैनेट का मार दे तो इधर आ जा। ओपन का क्या मिला ये बता। मैं क्रीन भाई कैसे? भाई अंगितम का अंत यूज कर, वो यूज करवा है तो डेंडो ही तो दे। कौन सा?
मुझे दे दे, मुझे दे दे। तू उसे दे दे ना, अपने उसको दे दे, टेक्नोलॉजी को दे दे भाई, टेक्नोलॉजी को दे दे अपने। भाई तुझे आता नहीं टेक्नोलॉजी यूज करने भाई, साफ बोंग। तू एक काम कर, तू एक काम कर, तू अपनी आईडी एक दिन की मुझे दे, मैं तेरे से अच्छा बिल्ड कर दूंगा टेक्नोलॉजी, और इतना अच्छा डैमेज दे के दिखाऊंगा उसी से ही। हाँ। मैं तुमको बर्स्ट दे होंगे, तुझे मार दिया। भाई तेरी जिंदगी वो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। मैं तू गाइडन की जगह बैनेट में, गाइडन की जगह बैनेट गएंगे भाई। तू गाइडन हटा ही दे। इंगेक्टो की जरूरत मुझे है ना, तुझे थोड़ी ना पड़ेगी इंगेक्टो की जरूरत। अबे तू हाइड्रो गएंगे था यार कोई। तू बैनेट यूज कर। मैं आजा आजा आजा। हम्म। क्या चीज? हम्म हम्म। मतलब प्रभावी दे सकता है सबको। कौन सा है सीरीज का नाम बता। Everybody stand back! Fallen leaves, adorn my night! Lightning, sure of that! Our bond is strong! हाँ, तुम नारुतो देखने पाएंगे फिर वन पीस की बात हुई हो। नारुतो में 700 समथिंग एपिसोड है, तो वन पीस में 1K से ज्यादा है। तो फिर तू वन पीस देखने भाई, मजा तो आता है। सीरियसली बोलूंगा, मजा आएगा तुझे। Out of my way! तुझे ना देख, मैं बताता हूँ तुझे नारुतो में कैसी वाइब आई थी जब तूने नारुतो कंप्लीट किया था। और वन पीस में भी देख वही सीन होने वाला है, तो अगर तुझे वो सीन को अपने। भाई मैंने नारुतो का एक एपिसोड मिस नहीं किया, ना ही वन पीस का, मैंने फिंगर तक देखे है भाई। तो फिंगर की बात कर मेरे से। मैंने 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 इसका Teamwork is dreamwork! भाई मेरा वन प्लस का है। रुक जा रुक जा रुक जा, कुकी का यूज करने दे। जिस भाई पाजी मेरे को झूठ मत कह देना भाई, मैं पाजी तुमने ऐसे मजाक मत किया को भाई प्लीज। मैंने कहा बंद किया है, झूठ क्या है भाई। मैं सोचा भाई कि फिर से क्रैश तो ना हो गया भाई, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं पिन क्यों आया है? दिया ना। कि- कितने चाहिए तुझे, कितने करने हैं तुझे, कितने डोमेन करने हैं टोटल?
अरे तो 4 सेट वो यूज करेंगे, सुन 4 सेट वो यूज करेंगे और एक सेट आप सेकंड का कोई और दे दे जिसमें CRCD हो। हैं? ये कैसी बात हो रही है? तीस तीस से ज्यादा है भाई। ओ शिट, मैंने यंगान निकाला नहीं बे। ओ बे मैंने यंगान नहीं निकाला यार, शिट। लेट मी शो ऑफ माई यंगान नाउ। नहीं नहीं नहीं, करेंगे करेंगे। ये भाई है बे, नूब थोड़ना है, पर्पल थोड़ना है। ओ तेरे पास गाइडेंस नहीं है ना? तेरे गाइडेंस नहीं है ना, तो शिट यार, गाइडेंस चाहिए थी इसमें। भाई इंग्लिश कर दो यार, चलो बंदा। अनमोल भाई कैसे हो? बद्दा है भाई ये। Quietly now. Here comes the catch. The process of elimination. Fallen leaves. Adorn my life. अनमोल भाई। Here you are. Teamwork is dreamwork. One with nature. Let's light it up. भाई प्रभव भाई कैसी हो क्या? Go in. Let's light it up. Here comes the catch. तू यंगान। Everybody stand back. As one with wind and cloud. भाई यंगान का डैमेज ज्यादा पड़ रहा है, एंगिटन से ज्यादा डैमेज यंगान दे रही है भाई, मजाक कर रही है। तबीयत की कैसी है अब? भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी कफ है बस मुझे। रुक जा प्रभव, तेरे चारों साइड घूम गए तो मैं। अब जल्दी कर, टाइम नहीं है। अबे मैं तुझको डेड बॉडी बना के तेरे चारों साइड घूम रहा था मैं, फायर देने से पहले। प्रभव का भाई। भाई कौन से? ए भाई अच्छा, डाक्टर भाजी मेरी वॉइस आ गई ना स्ट्रीम में? डाक्टर भाजी मेरी वॉइस आ गई ना, देखो। डाक्टर भाजी मेरी वॉइस आई चैट में, देखो तो। This blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather. तू गाइडेंस शो नहीं यूज कर। आ गया ना, आ गया, ठीक है। लेट्स डू दिस। यंगान बहुत अच्छी है, बूम टीम की नहीं, वही तो अभी अच्छी बात करिए, हाइपर बूम टीम। अरे प्रभव मेरे यंगान, अबे मैं यंगान का वो देखा बस्ट कितनी जल्दी चार्ज हुआ है, ये देखा तूने? मैं तेरे आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे इस बार। इस बार मैं तो अच्छा ना यंगान फिजिकल थोड़ा भाई, कैसी बात कर रहा है? Take it easy. चल ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। अरे फूड बहुत है।
Busted. Shine. Into the wind. Now you shall perish. पर्पल मिंग सीते हैं भाई। Illusion shattered. अच्छा The wind knows me. Game's up. Time's over. The process of elimination. भाई पर्पल ऐसे चेंज मत कर भाई टॉपिक। तूने कहा है भाई अभी। Things are about to get dicey. Shine down. Scatter. Inazuma shines eternal. एक आइटम है तो दे दी भाई, पर वो हाइपर बूम तो हो है, डैमेज ज़्यादा दे है। One with nature. Into the wind. Game's up. Time's over. तो तुम ऐसे ये क्यों करवा रहे? Illusion shattered. Wind strike. बस्ट नहीं, मैंने एगो मारा था, लास्ट में बस्ट मारा है। ओ ये गाइडन दिस इज क्या दिया? मैंने क्या किया है भाई, इसमें मेरी क्या मिस्टेक है? हेलो, व्हाट इज योर नेम भाई? हाउ आर यू? बैनर वजह से हुआ नहीं टीचर। अरे यार ये पता नूब से भाई, पापा नूब है भाई, क्या करे। जीएस भाई कैसे हो? अब This blinding sunlight is such a pain. जो No way I can get a nap in this weather. हाँ सुनो, ओ शिट। अच्छा तू एग्जिट हो चुका है? मैं तब तभी मैं सोचू मैं काजुआ एंगितम ने क्यों नहीं पाया मैं। This blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather. चल ठीक है, तू एक हाइड्रो टीम में कोई भी बैनर नहीं है, चल कोई बात नहीं। यंगान कब पुंग क्या? यंगान मैंने कंग ही निकाला है भाई, कंग निकालते उसको 70 कर दिया मैंने। अबे मैं वो चैट में बताऊँ, तुझे नहीं क्या प्रभाव, तुझे नहीं क्या, मैं चैट में बताऊँ अभी। तेरे कंडेंस एजेंट्स का मैं क्या कहूँ भाई, वो उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी, उसने पता तू कुछ नहीं करने वाला। तेरे ना वो उम्मीद छोड़ दी उन्होंने। चल इस बात को दिखाते हैं। Stand with me. नहीं मैंने वो थोड़ा बढ़िया बढ़िया जोंगिन को सेक्रीफाइस कर दिया। अभी कहेंगे तो सेक्रीफाइस है, बट हो सकता है निकालने। मैं आखिरी डेट तक जोंगिन निकालने की कोशिश करूंगा। Process of elimination. Here you are. मेरा पिंग हाई आ रहा है पता है। One with nature. Clouds high. The birds come. पिंग हाई की वजह से ना मैं डैमेज नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर पा रहा टीम के बीच में। स्विच करने में बहुत टाइम वेस्ट हुआ। 462, 469, 463। देख अब तक कुकी कब का मैंने स्विच किया, ये अब जाके स्विच हो गई है। Flicker.
The wind knows me. Let's light it up! Out of my way! Teamwork is strength! One world. भाई आउटाई की दिक्कत नहीं है बे। ये मेरा एमएस सुबह देखा था 500 आया था, फिर उसके बाद अचानक से 150 हो गया। I'll settle this. Stand 468 400 बूम बूम तेरा, बट जो पर्सन है वो तो मेरा है। stand with me. कुक्की के साथ आता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे तू जा जा जा। मैं यहीं पे एंगेजम का बस्ट यूज करता हूँ। मैं मंत्र फूक रहा हूँ यहाँ से। प्रभव को फूकू क्या? फूको मंत्र पूछो मैं भी। भाई मैं क्या करूँ भाई, मैं तो अभी इनकी बात तो आया भी नहीं ना मैंने। अबे भाई मैं यहाँ से मूव तक नहीं किया, सेंटर में हूँ भाई मैं। तू स्ट्रीम देख सकता है भाई, मेरे वजह से कहाँ से दिया? जोंगे निकलेगा यार अनमोंग भाई, टेंशन मत लो। एयर शील्ड देगा वो। अब वही करना डोमेन। रेजन्स कितने बचे तेरे पास? रेजन्स कितने अभी? 20 20 से तो ज्यादा ही होंगे। सुन अबे यार 20 होगा ना, सुन मेरे को काजुआ करने दे, तेरा पक्का निकाल दूंगा मैं। तो Take it यहाँ easy. से कूद के नहीं मर सकता भाई तू। अच्छा सुन सुन सुन, तू मेरे यहाँ पे आ, तू मेरे इसमें आ जा क्राफ्टिंग टेबल पे। ये भाई तो एक काम कर, मैं आर्ट इस पे आ जा क्राफ्टिंग टेबल पे, उस पे आके तू कर, तेरा पक्का निकल जाएगा अच्छा सा। बाय बाय ब्रो। अरे है, मेरे को नाम नहीं पड़ पाएगा, जापानीज में लिखा हुआ है। This blinding इसमें ट्राई करते हो, sunlight पक्का is कुछ such अच्छा a देगा वो। pain. No way I can get a nap in this weather. अबे रेजेंस नहीं, वो करना तू अपने सेक्रीफाइस करना सब आर्टिफैक्ट्स कुछ जो अभी लिखने हैं। हाँ डार्क स्टार अजीब होगा। कोई और ट्राई करना, कोई और। अच्छा मेरे पास ओके चल, एनर्जी रिचार्ज, क्रिट डैमेज, बंड स्टेन, क्रिट 8, क्रिट डैमेज एचपी, एनिमो डैमेज, अटैक, क्रिट 8। भाई नहीं कर दो यार पांचों बंदे। तूने अभी अपग्रेड किया होगा ना? वो प्रभाव ये सही नहीं है भाई, तुम मेरे बंगले में आके हैंडशेक कर रहे हैं। Star Snatch Cliff is known for its views. तुम मेरी स्ट्रीम देख एक बार तुझे समझ आ जाएगा, वो अपने साइड में देख कौन पे खड़ा है। वो एक प्रभाव, एक इधर 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 मैं ना नाइट कहूंगा, एक इफेक्ट देखियो तू, ठीक है? कहाँ है तो? Come take a look. There will definitely be something.
यंगान भाई, यंगान का जो एरो होगा ना, वट नेवर यू हैव, मेरा भाई मेरा ये 65 है शायद। यंगान का जो एरो होगा ना, वो देखियो जैसे हम विश करते हैं ना वैसे दिखेगा। देख आसमान में देख पर, जैसे हम विश करते हैं ना सेम उसी की तरह दिखता है ये। तू Take it easy. बाका है क्या तू? अभी मैं उस पे जाना, तो टीपी का उस पे फोर्स नेम, उस पे मैंने वोट सेट किया हुआ है एक टेलीपोर्टर, तो उस पे जा टीपी कर, वहां से जंप करना पोस्ट नेम पे। मैंने उस पे टेलीपोर्टर सेट किया, पोस्ट नेम पे टेलीपोर्ट कर, वहां से कूद। It's getting a डॉगी little की मौत मर cold. तू, Time to तब जाके bundle तेरा up. कर्ज दो होगा। सुन 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 पाजी, ये तो वो देखो जैसे कि वो हम विश करते सेम वैसे दिखते हैं। ओ यार तू बहुत घना टाइम पे एग्जिट हुई। मिला कुछ? नहीं नहीं। हाँ शाओ दिख रहा है, गद्दार है शाओ ये, इससे बात मत करियो प्रभु से, वो अंडर आते ही- भाई दिख रहा है वो। तू कैसे उसके साथ धोखा करता है तू? जब से वो अंडर आया तब से शाओ को भूल गया था तू। डेबिंग सॉन्ग भाई जा रहे हो क्या? ओके हमें वो करना था, आर्टिफैक्ट। हाँ हाँ, फाउंटेन। भाई बंदे दे, प्रभाव को जो भी देखा है गाइस, आई वांट टू से समथिंग। तो नाइट बोर्ड क्या कहेगा? क्या मैं सिखा दूंगा। क्या कहे क्या अंकल? बद्दा है भाई, प्रभाव ये कब हुआ? ओ ये मैंने डोमेन नहीं किया। अभी तो प्लान नहीं है। हम्म, हाँ। You you want me ये on your नया team? सिस्टम आया प्रभाव। सिस्टम यही यूज करते हैं। हाइडो की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तू प्रभाव ऐसा मतलब क्या, टू के पे तू क्या करेगा सेकंडरी सीरीज उसमें क्या करेगा? स्टार्टर से तो हो ही जाएगा। अच्छा मैं चेंज कर सकता हूँ बीच बीच में, नाइस।
और भाई इन्होंने ये नया फीचर अच्छा दिया है यहाँ पे कि ना तुम डोमेन में अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो। Busted. Into the wind. कौन? Fallen leaves, adorn my night. Gotcha. The floor is going up. संग में नाइट बोट गाना तेरे को सिखा दूंगा, डोंट वरी। Mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. ये डोर से अंदर जाना है। ओह, ऊपर जाना है हमें। But Paimon doesn't see a way. ऊपर कैसे जाएंगे? Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. बताओ, जिसके पास नहीं है वो भी ऐसी बात करे। तो वो अब ये मत कहते मैं झूठ कह रहा हूँ। तो हम ये कहते हैं यहाँ से। ओ इस पे मैं बॉन्डर बिंग करेंगे। शाह कहेगा भाई अब बॉन्डर बिंग किया नहीं, क्या अब ये आ गए यहाँ पे। करना पड़ता है भाई उसके लिए। किसका? नहीं प्रभा, प्लीज डोंट डू दैट। The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. मूव है। Time to go. ओके ओके ओके। Quietly now. मेरे तो पिंग इतनी हाई आ गई ना, मैं वो नहीं कर पाया यूज। Our bond is strong. Here comes the catch. Scatter. अबे राउटर के हिसाब से नहीं बे, पिंग की इशू हो रही है। इंटरनेट की स्पीड तो सही आ गई है। अगर क्योंकि इंटरनेट अगर पिंग का इशू होता है ना, उससे पहले में स्क्रीन लैग हो जाती है। Busted. Lightning terrified. Dissipate. मतलब तुम्हारा कर्ज सुधर जाता है, साफ कहना चाहते हैं ना तो ये। जो भाई जो जिस चीज को तुम शिद्दत से जाते हो ना, कहना छुपाने की जाती है। ये सांगा ये आगे, इससे छुपाओ ये। मुझे नहीं मिला तो इसको कैसे मिलेगा? भाई मैं सच बताऊं भाई, तू जिस चीज को जाता है, अच्छा तू सोच, तू जिस चीज को जाता है दुनिया तुझे तेरे को मिला देगी। तो अपने फ्रेंड से बता दे भाई और उसने क्या कहा? नहीं नहीं की। हाँ भाई वो अलग बात है कि पहली बार में ही ना हो गए। Quietly now. Into the wind. Things are about to get dicey.
ओ डैम। Gotcha. No. Stand with me. I'll settle this. As one with wind and cloud. The process of elimination. क्योंकि कंफ्यूजन तो तुम्हें होती है। Here you are. तुम कंफ्यूजन को नहीं देखते, कंफ्यूजन तुम्हें देखती है उदासी भरी आंखों से कि यार यार इसकी जिंदगी में भी थोड़ी खुशियां डाल देती, काश में इतनी पावर होती। Take it easy. पता नहीं यंगान 16 एवन के फिर भी उसकी एचपी कुक्की से ज्यादा है, पता है यंगान की। ये तो है। तुझे उसने मना कर दिया, इस वजह से तुझे तेरी एंटी पता चलेगी कि दैट यू आर गे। So as expected, the mastermind. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the opera house and help Navia. तो अब मजा आ रहा है तुझे? What's all this? Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Prince sees it too, but... Huh? You mean the girls from the cereal? And then they were turned... And all the boxes of things. These names. क्यों उसे फूड भेजे क्या देंगे? फूड भेजे देंगे? दिया ने फूड भेजे क्या देंगे? भाई वो सभी कैरेक्टर के साथ हो, तू स्पेशल ना है तो कहीं तो सोचो दिया थे। पैती का आगे क्या? Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the... Mixing... पैती भाई बच गया ये परफॉर्म से। Drink? ये बंदा थोड़ा बहुत There's even fruit-flavored synth? Yep! प्रभाव का टेस्ट चेंज हो गया डे बाय डे। What's this over here? Looks like some kind of... Experiment number 6. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female... भाई Sorry, traveler. Paimon will try her best. How can someone write... पैती के एग्जाम्स खत्म हो गया? Read the rest. Paimon's too scared to keep going. पैती का माइक बंद है। So that's why he did all of the... Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? नहीं तेरी साइड से नहीं है। The name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? वो डार्क स्टार बाजी के आवाज है भाई, मेरा नहीं है, डार्क स्टार बाजी का है। Vache? No, that's not it either. If that's the case, why would he want in any case? भाई सॉन्ग फ्यूरी कह रहा है, तुझे पता है मेरे पास बॉन्डर नहीं है, तू मेरे से पूछा ये बॉन्डर का टैग हो गया। बेंटी बेंटी तो मिल ही नहीं सकता भाई, एक सेकंड वही मैं सोचा बेंटी। बैनेट 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 Look! There's an important looking basin over here. And it's full of मैं वही things. भाई मैं Synth. And that special water is the main... If you dilute it with normal water, you'll get synth. The pure stuff can dissolve a human.
Paimon will take notes on this incriminating evidence. Let's see what's written here. डैम Detective Paimon's eyes. न्यूवेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंड बिलीव ही स्मैश चाइंग हेड ऑन है। Father. भाई मैंने देखा है वो, मुझे पता है क्या होता है यार चाइंग डिफ्यूजन यूज, पर पता है उसमें एक चीज की दिक्कत आ गई है कि चाइल्ड का ना डिफ्यूजन एक्टिवेट नहीं हो पाया था फाइनल फॉर्म, उससे पहले उसने हिट कर दिया था। अब वो प्रभव का आइडिया है, मुझ पर है कुछ, उसका कुछ है फ्रेंड है उसका। और दूसरी बात ये है कि डिफ्यूजन ना चाइल्ड चाइल्ड हर बार के चाइल्ड के साथ यही सीन होता है कि वो हर बार यही होता है, एंड में स्मैश हो जाता है, वो कोई ना कोई स्मैश कर देता है। We still have the old dogs. He can act when I concur. Let's send some. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher ups. प्रभव को फोन आ गया भाई, अभी फोन में बात कर रहा हूँ। We've looked at almost everything. प्रभव पता नहीं क्या कह रहा है, वो रंग बिरंगा झंडा सा कुछ खरीद रहा है, मुझे फोटो भेजा है उसने, पिंक रेड येलो, पता नहीं 8-10 कलर उसके अंदर है, पता नहीं क्या बना रखा है। Whoever that way, even if we bring all this back to the opera. और टी शर्ट भी है, टी शर्ट भी स्ट्राइप वाली वैसी। To this guy either. कह रहा है, तो कह मैं प्राइड में हूँ, प्राइड कुछ कह रहा था, प्राइड में कुछ कह रहा था वो। क्या वो मनाएगा उसको, क्या स्पेशली वो अपने लिए बनाएगा वो You take that side and Paimon will प्राइड take आर्ट। this side. वो फोन पे उसके मोटोरोला का वो म्यूजिक बजा था अभी, वो रिंगटोन सुने नहीं थे क्या तुमने? It all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa. प्रभव यू हैव समथिंग इन योर माउथ भाई। Vinier. Isn't that Fashie's lover's name? सेम एज योर एज। Then you found her diary. Aw. It's just so many. The final name Marcel. Wait, but भाई प्रभव की स्ट्रीम देख के यार, जो भी देख रहे हो। लेट मी सी मैं तब भी बहुत फेथ सेव करके रखा था जोंगिन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 20 वीगन बैनर, लगता है हाइडो आइकॉन एंड नेविड को भी पूर्ण करूंगा। मैं बताऊं तुम्हें, तुम ना पहले जोंगिन निकालना ना, उसके बाद दूसरे ट्राई करना। Is it a man named? Oh. प्रभव के ट्यूशन के भाई, इंस्टीट्यूट के उसके। I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. नाइनी वन शॉट कर रहा है। अरे नाइनी देख, नाइनी ना वन शॉट कर सकता है, बट उसकी एक प्रॉपर टीम है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है नाइनी की। क्रायो के अगेंस्ट वन शॉट कर सकता है वो। It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. कौन सा? अबे मेरे को, मैं कैसे देखूं, मैं अभी चंग में देखूंगा। The truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. तेरे अब भाई तेरे वॉइस को ठीक करने, यू हैव समथिंग इन योर माउथ, उस चने को चबा के बात कर भाई प्लीज। Claire, we already know everything. After your lover Vinier was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache. ते वोकन कोड में कुछ दिक्कत आ रही है। That's it. Even the villains in opera performances rarely go that. And with that, Marcel's motive, this information. तो तू कुछ अप्लाई कर ना, वीकेंड या कुछ यूज कर ताकि डैमेज कम पड़े तुझे। Well, Marcel, do you know where you went wrong?
You भाई नाइनी का फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बढ़िया ये भी तो सोच यार, तू पायो के साथ ही यूज कर सकता है, किसमें यूज करेगा तू? around you. So, you never noticed how we changed or शो how we शो grew ऑफ किंग as नाइनी। individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. अबे वो नहीं कह मैं क्या, शो ऑफ किंग अच्छा है वो, एक टीम बनाओ शो ऑफ करने के लिए, वो सही है। Determination. क्या हुआ? Mr. Marcel, please speak up now if you'd like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your... No one helped पाजी तुम अपना उसका म्यूजिक बंद कर दो ना गेम का। All those decades ago, even the officers from the अरे यार were laughing at me. मीडिया साउंड बंद कर दो ना, कौन साउंड होना है तो। So I must have gone, well, now you know, don't you? Ha. Well, it's too late now. पाजी के टेस्ट चेंज हो गए हैं पाजी। Gone forever. Are you sure भाई? You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow! So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed callous still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. ग्रीन लाइन नहीं आया, अब 1+ लाइफ टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रहा है। Signs of mental distress. ओके Restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. A promise. ओके I made a promise. Vignier. Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that... Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind अरे the एक का माइक म्यूट है। disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. प्रभाव तेरी वॉइस Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. ध्यान दे। To cover his tracks, Nah. he invented the new alias. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research, नहीं स्टार्टिंग में सब उसी पे आता है। he came into conflict with Spina अपनी de प्रोनेस Rasula. दिखाने। After exchanging blows with So- Spina de Rasula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn सब Callus जिंदा है into भाई, a murder पाजी। suspect by dissolving the माइक को यार। assassin sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water... प्रभाव from the primordial तेरे sea मुंह में कुछ है became भाई। knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court.
Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. ओ प्रभाव नहीं हो गया भाई, प्रभाव अपने ही रूम से नहीं हो गया है। The final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. उसको मैंने कहा है। ओके ओके मैं समझ गया। According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards, take Vacher away. 1 मिनट रुकेंगे मैंने। What he deserves. With that, the serial... We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? We have found him! Bring the bad guy to justice! ओह नाइस। He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Marcel, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. It's finally over. भाई मुझे ये चाइल्ड का सीन देखना है। All thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. Oh, what now? None of this has anything to do with me. आशीष हैंगो According to court हैंगो है documents, आशीष कैसे हो? since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial ओ चचा case. कैसे हो चचा? The guilty party has been आशीष identified. भाई चचा बोलने Thus, मुझे it is logical to Why? suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. बट चाइल्ड क्यों गिनती है भाई? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? भाई ये सही नहीं भाई चाइल्ड को अरे भाई आशीष भाई इट्स ओके। The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take this. भाई अब आएगा मजा। So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too!
चाइंग ने भाई, पर चाइंग का फाइनल फॉर्म नहीं आ पाता यार शिट भाई। यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी यार, ट्रेन में मैंने देखा था यार, चाइल्ड को ना फूंग पावर एक्टिवेट करने के देना चाहिए था ताकि फाइट हो पाती अच्छी। I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. भाई मैं सच में चाइल्ड की मदद करना चाहता था यहाँ पे, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं पक्का चाइल्ड की मदद करता। ये पक्का हाइड्रो ड्रैगन होगा भाई, इतनी पावर कौन किसी में हो सकती है जो चाइल्ड को ऐसे हो सकते हैं। ये पक्का हाइड्रो ड्रैगन है। Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you looking at me? I had nothing to do with it. I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! वो बोट में घमंड आ गए कैसे पति भाई। अगर तुमने मैं थोड़ी सी पीछे स्ट्रीम करके देखो, But that's impossible. Didn't she create the oratrice herself? अगर पीछे चाइल्ड की फाइट थी भाई, उसमें मैं ना चाहते हुए भी गिव करना था मुझे। My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of अरे ऐसा कुछ नहीं पति भाई, ये फाइनल फाइट देखना था मुझे, उसमें बहुत शौक आया था। everything that just took place, including my अरे यार इट्स ओके भाई। was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, शट अप भाई पति भाई, क्या हुआ? अरे चाइल्ड की फाइट तुम पीछे स्ट्रीम देखे देखो, तुम्हें चाइल्ड की फाइट दिख जाएगी। expected from the very beginning, as the embodiment of the very concept of justice, the oratrice shall never render an arbitrary judgment. If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary. ऐसे सीधा ऐसे सिंगा दिया मुझे मेरे यार नहीं मोट गया घर यार का अच्छा सिंगा। अरे यार प्रतीक भाई उस ये इस क्वेस्ट के बीच में वो फाइट सीन था जिसको मैं मिस नहीं करना चाहता था, और पाजी की गेम की साउंड बहुत आ रही थी, तुम्हें पता है ये बात। पीछे का एक स्ट्रीम देख लो मैंने कब लीव किया है। It is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo. So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. डार्कनेस भाई Just as कैसे I हो? promised, the judgment has been incorrect. We will do ऐसे सीधा अरे डार्क स्टार भाई हमें तो अब अकेले रहना पड़ेगा। Pretty badly for him. Well, take your word for it. For अगर डार्कनेस भाई शायद क्या कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है मैंने क्यों लीव किया, तो मेरे को देखो तो सही पीछे स्ट्रीम में।
चाइल्ड की फाइट आई तो मैंने नहीं किया था। चाइल्ड तुम्हें पता है भाई टैग में जब वो डिंग्यूजन यूज करते वो सीन था वहाँ पे। यार तुम सब भाई तुम सब भाई मेरे को गिंगटी फीलिंग करवाना चाहते हो क्या भाई? यार चाइल्ड को नहीं करना चाहिए था। यार चाइल्ड के साथ नहीं करना चाहिए था यार ये सब। भाई मैं सच बताऊँ यार चाइल्ड को इन्होंने जो किया ना भाई मजाक कर रहे। अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने, वरना अगर चाइल्ड की साइड से फाइट करना होता ना तो ऑप्शन होता जिससे तुम चाइल्ड के एज अ कंपेनियन फाइट कर सकते हो। तो मैं मेरे पास यार कोइंस नहीं है, शिट मौका नहीं मेरे पास, तो मैं पक्का फाइट करता। इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं। आगे यार प्रतीक भाई Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey, traveler! Marcel, what are you doing over here? Stop resisting arrest. Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait. I just want to ask the traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me. अरे क्या हुआ भाई प्रतीक? क्या हुआ डार्कनेस भाई? क्या हुआ तुम दोनों को यार? Thank you. I was being led away and finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You sure? You met her? But how could that be? अरे नहीं अरे प्रतीक भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डार्कनेस भाई वेट Fountain of Lucine? And she's been so close to me all along. I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? मेरे पास ऑप्शन मत देना। Is it worth as much to you as your life? Of course. Wait, no. It's worth even more than my life. If they betray the instinct of life just to satisfy spiritual needs. ये क्या है? नेम? Very well. I will grant you. मुझे लगता है मुझे दो Your Honor, I fear them. I will go with him. You do not need to worry about anything. ये हाइड्रो वो है क्या? हाइड्रो ड्रैगन है क्या ये? I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. एन क्या होता है? Thank you, Your Honor. प्रतीक भाई ये कहना चाहते हो तुम? आई गेस एन मतलब ये भाई पता नहीं भाई, पहले तो माइक को यार सब ये एन मतलब क्या होता है? ये क्या होता है पता नहीं भाई। आई डोंट नो, फिर मुझे नहीं पता भाई। अगर तुम फिर तो मुझे नहीं पता। अगर तुम इसमें कोई नाम है किसी का भाई तो फिर नहीं पता मुझे। सिंह मतलब नाम ही होगा, फिर नहीं पता। Is this the place? You said she's here, but what do I have to do to see her? ये बाजे फिर कोई ना कोई अफवाह फंगाने लग गया क्या? तुम भाई डार्कस्टार बाजी की बातों में मत आए करो भाई। Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Ah, Yes, that's it! So you heard it too! yeah, it's me! It's me, Vache!
अगर डार्क स्टार पाजी की बातों में बताए तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मतलब पक्का झूठी होगा। I'm here. Are you here? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! भाई मुझे रेस्क्यू करने की मत करना इस बंदे को भाई तुम। Vignette, is that you? It's me, Vache. Vignette. Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. ओशनॉइड You're a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vignette, you are my everything. I really don't know how I could live without you. Natasha, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Merlin itself. भाई डार्क स्टार पाजी की बातों में बताए वो। For you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. ये इसका मर्डर कर देगी। Wait, you are not Vignette. Who are you? You're right. I am not Vignette. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand. As our bodies dissolve, our consciousnesses flow back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea. And we were no longer individuals, but we became one. Just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm AC. The only one I am not is Vignette. What? But then, where is Vignette? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. पति भाई क्या कहा तुमने भी। Ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? ट्विटर नहीं भाई, ट्विटर मेरा उससे है रोबोट इन गेमर नाम से। I... You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignette's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignette's, डार्क स्टार हो गए थे आपकी वो ट्विटर थी वो नहीं बनी। ट्विटर कौन से भाई? ट्विटर मैं ट्विटर रोबोट इंडियन गेमर नाम से भाई। एक बार तू दे प्रतीक भाई, तुम देखो एक बार। Let me see her. Please. Have mercy. you still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignette. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's the final draw of pity for you. She said that you
तो वाश्य मर गया मतलब? अरे ट्विटर क्या होता है भाई? ट्विटर तो वो होता है। अरे अरे एक सेकंड समझ गया। ट्विटर का नाम चेंज हुआ है ना। अरे प्रतीक भाई झूठ गए डॉक्टर बाजी। नहीं झूठ गए। Well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Iman's already started to miss you. Oh, now that I've डॉक्टर बाजी की बातों मत आएगा प्रतीक भाई। वो तुम्हें पता है, वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा सीधा कहते थे। having a partner like me. सेंसलेस बातें Doing life these days, Navia. What have you been होती doing रहती हैं। since the trial? It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like. ओके It's been the dearest wish of Demoiselle all along. ट्विटर नाइस। माइंड तुमने अच्छा यूज किया, क्रिएटिविटी तुम्हारी अच्छी है Right to प्रतीक put भाई। my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steamboat? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be fair though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wish has finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sounded really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with the pen for sure. Oh, and in other news, भाई डॉक्टर बाजी कितने छूट गए थे यार, तुम्हें 10 बार मना किया है फिर भी। You two on better terms now? while you were investigating Vache's headquarters, Florent gave testimony on my father's behalf. अगर ऐसे ही चलता है तो मे भी मुझे Thanks to her that we were able to turn the tide. बंद करना पड़ेगा डॉक्टर बाजी को। I mean, there's also no point in being awkward all the time. So we took the कुछ chance भी to बताना या कुछ reconcile भी with each कहना, other. क्योंकि वो मिक्सअप कर देते हैं 2-3 चीज़ों I को। also thought Florent wasn't actually a bad person. इंडायरेक्ट वे में कहूँ तो शायद बात करना कम करना पड़े मुझे डॉक्टर से। Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade into the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him to this day. That includes me, too. Miss Norval. Indeed. We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. नाइस। ग्रेवयार्ड जाना है हमें।
father's grave is. Huh? There's someone there already. Wait. That figure. It can't be. Isn't that Nervalet? Why would the Chief Justice be here? नोवेनेट क्या करने आया यहाँ पे? Nadia? My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. नोवेनेट हाइड्रो ड्रैगन हो सकता है, मेरे को जितने 100% चांसेस लगे इसके. I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown. Still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Nervalet. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believe that a truly innocent man would never throw away his life like that. If there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. ये पक्का हाइड्रो ड्रैगन है. If not for his sacrifice, the serial disappearances यार case would have remained यार ये unsolved. अगर ये कैसे आएगा तो निकालना पड़ेगा भाई. Mr. Callus made the choice he did for his daughter. न्यूविंगेट आएगा तो फिर तो भाई. And for many people completely unrelated ओ to भाई him. ये क्या है? ये कंफ्यूजिंग है भाई. हाइड्रो आइकॉन भी अच्छा है, न्यूविंगेट भी अच्छा है. One could say that he did it all for the sake of justice. Justice that's higher than life itself. You asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera epic class indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Ah, so Navia and Nervalet seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. भाई बारिश बंद हो गई. नाइस. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Huh? Paimon didn't know that was a thing. What? Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. Anyway, Nervalet is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? ओके तो नोवेनेट से पूछते हम कुछ चीज़ें. नोवेनेट वी हैव सम क्वेश्चंस. Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see. Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's
Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. So, at Port, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea. But what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vache and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tivat's life forms were first born. हेलो जो भाई कैसे हो? You could say it nurtured much of the life on this planet. Mike. So it really was where everything began. It makes sense. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. Wait, if that's the case, then why would people... वो इमेज कहाँ है? कौन सी इमेज? At least people from Fontaine dissolve in that kind of water. Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? फाउंटेन That the sea levels will rise and everyone will be भाई माइक को है बाजू बंद। leaving Farina crying alone on her throne, but the sins अच्छा वो इमेज कहाँ है? अच्छा इमेज गेमिंग। अरे पता नहीं भाई, अभी तो आया नहीं। हो सकता थोड़ी देर में। That's right. It was Lenny that told us that. उसकी शादी भाई प्रभव के साथ आज भूल गए क्या? Covers all the main points. Yes. तुम तो आए नहीं तो प्रभव के साथ शादी I उसकी। think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Garena has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tivat for this purpose. If the rumors were true, perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else? मैं आज आइकन क्वेस्ट का पहले ऐड किया। आइकन क्वेस्ट का पहला My apologies. यार तुमने देखा चाइल्ड को कैसे पीटा इन्होंने? Reached its conclusion. यार चाइल्ड को ऐसे नहीं पीट सकते। However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, थर्ड एक्ट है शायद, सेकंड या थर्ड एक्ट होगा। such as self-awareness. Which is all to say, I've been prepared for a situation like this. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored, I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. We'll add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any जो idea. भाई हमारा दोस्त बनोगे। She managed to bluff her way through it, though. The time-tested twin tricks of bravado and drama. मैंने भाई प्रतीक भाई क्या कहूँ मैं? For now, तुम डार्क स्टार की बातों में मत आए को भाई, मजाक सटके। मेरा कभी कभी मन करता है डार्क स्टार को बुंगा खो दो व्हाट्सएप पे, उसकी ऐसी हरकतें देखते भाई। if we did incorrectly convict him of वो crime, झूठी अफवाहें जब फैलाते ना भाई, मैं मन करता हूँ उन्हें बुंगा कर दो। सीरियसली मैं बहुत बार मन हुआ step है। allowed by the law. if you ask Paimon, the only compensation
Is there anything else you'd like to ask me about? लास्ट क्वेश्चन. Your sibling, another blonde-haired traveler. I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If she ever stepped foot in front प्रतीक of नहीं you, नहीं प्रतीक नहीं है. I'm sure she प्रतीक इज अ followed बॉय. orders to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? हाँ नहीं हो गया. Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memoria. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only ना भाई पर today because you had the day off. अरे डॉक्टर भाई की बातों में मत आएगा भाई. And so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. भाई नाइट कर 6 के 6 बंदे जो भी देख रहे हैं. All right, you've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. अच्छा ठीक है. एक्ट सेकंड एक्ट कंप्लीट हो गया. नाइस. ओके हमारा सेकंड एक्ट कंप्लीट हुआ फाइनली. now we get some wishes too. स्टोरी क्वेस्ट अब अनलॉक हो सकती है कोई. अनलॉक भाई स्टोरी क्वेस्ट अनलॉक हो सकती है. नाइस. दैट मीन्स मेरे पास अब ये थर्ड क्वेस्ट आज स्टार्ट होगी कल स्टार्ट करें. थर्ड क्वेस्ट आज स्टार्ट करें कल स्टार्ट करें. आइकन क्वेस्ट का थर्ड फेज मेरे हिसाब से कल स्टार्ट करनी चाहिए. वन क्वेस्ट करते हैं आज भाई. बहुत सारे क्वेस्ट है भाई फाइनली. Stand with me. Quietly now. Wind strike. Out of my way. भाई नाइस. अब हम आइकन क्वेस्ट को कंटिन्यू करते हैं. वन क्वेस्ट में कुछ क्वेस्ट है उनको देख लेते हैं. इनमें से किसी में प्रीमोज है क्या? एक सेकंड में वो प्रीमोज चाहिए मुझे. प्रीमोज के रेजिंस डोंट टेल मी. मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा. पेंगुज से पहले ये देखते हैं. यहाँ एक चेस्ट है. चेस्ट मोड में थे. भाई ये क्या है? Follow the wind. बाय भाई शो से स्टार्ट होना पड़ेगा. वो कुछ गड़बड़ होगी इसमें. Time to go. अबे यार ये बहुत फास्ट है. ये कैरेक्टर बहुत फास्ट है इसमें. Here you are. ये उड़ तो रहा नहीं है. क्या है बीमारी भाई इसकी? कहीं और किसी और के पास रोबोट तो अब
सुन भी नहीं रहा यार भाई। तुम सब एक ही चीज़ की बातें रिपीट किए जाओ जो कि जिसका कोई सेंस नहीं बना है भाई। भाई तुम में से कोई कुछ भी बोल दे एक बात, तुम तीनों में से तुम सब उसी चीज़ को यकीन करके उसी चीज़ को कहे जाओगे भाई। प्लीज उड़ जा। भाड़ में जाए, मैंने कहा ये क्वेस्ट चैंग जाए मैंने। ये भी नहीं हो सकता, ये इसके वो करना पड़ेगा। चलो वही चलते वापस। क्वेस्ट ये गया। थोड़े से कॉइन्स टक के करते हैं, आई गेस कुछ ढंग का मिल जाए। हाय जो भाई, हम तो तब से मजाक कर रहे थे। अब कुछ भाई यार तुम सब ना भाई, तुम सब ऐसे टॉपिक्स पे मजाक करते हो ना जो कि अजीब है भाई। ऊपर से तुम नाम ऐड कर देते हो भाई। देखो तुम मजाक में हो, अच्छा एडवेंचर किंग अनोखा है, मजाक में भाई मुझे कहो समझ आता है भाई। तुम ऐसे किसी पर्सन का नाम ऐड करो जिसको मैं जानता ही नहीं। ये क्या है? इसे तुम तेज तैर पाते हो। ओह 1 मिनट, यहाँ का फायदा ही कितना अच्छा है भाई। एवं 2 रेपिटेशन चाहिए हमें। नॉट अचीव। अरे नहीं चाहिए भाई, फेक हार्ट नहीं चाहिए हमें। एटलीस्ट ऐसा हार्ट दो जिससे हम बेच के प्रीमोस तो खरीद पाए। वो है कैथरीन से बात करनी है मैं शायद वहाँ पे। ओके फाउंटेन में कर सकता हूँ मैं अपने कमीशन। सो मॉन्स्टैड में, मेरे हिसाब से मॉन्स्टैड में ही सही है। अभी तो गिफ्ट रिजेक्ट कर, गिफ्ट रिजेक्ट नहीं किया भाई मैंने, सिर्फ बता। फाउंटेन में कमीशन कहाँ है अभी? कमीशन है क्या अपने पास? अच्छा डन हो चुका है ना। सीओ इन्हें कुछ और चाहिए। अरे मैंने नहीं लिया। अरे जियो भाई ने रख लिया भाई अपने पास। मेरे से पहले जियो भाई ने छीन लिया भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या शॉप ओपन हुआ है क्या अभी? नहीं है, ओपन नहीं इसका शॉप अभी। सीरियसली भाई, जियो तुम होना असली दोस्त भाई। ये पता नहीं कहाँ पे है। ओके अब हम आइकन क्वेस्ट आज कंटिन्यू करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो स्टोरी क्वेस्ट कर सकते हैं हम।
स्टोरी क्वेश्चन है ये। एक सेकंड यार, ये आइकन है कि स्टोरी समझ नहीं आ रहा मुझे। वन क्वेस्ट, कमीशंस, स्टोरी क्वेस्ट, स्टोरी है। किसी को बिंड करेंगे वो करेक्टर खुश रहेंगे। आइकन कोश ना हर देंगे एक ही करेंगे, पर आइकन कोश इतने बड़े होते हैं कि एक स्ट्रीम में एक एक्ट उसका ख़त्म नहीं हो पाता। स्टोरी कर लेते हैं 9 की। वैसे विश किया क्या? ओपरे वांगे फाउंटेन पे, ओपरे वांगे फाउंटेन पे हम विश कर सकते हैं क्या? पता नहीं। Now that he's back, I'm sure the guards who worked on his case back in the day are in for a headache, but however this turned... Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one. मुझे बताना भी, मैं एक बार ट्राई करूँगा। Whom should I interview next? Huh? Hey, what a coincidence! Fancy meeting you here. Perfect timing. So, एक बार मैं ट्राई करता हूँ एक सीन को। latest warning letter. What are your thoughts? Yeah, this is the first time we're hearing of this one. Could you clue us in? Huh? Oh, sorry. Yes, this case is from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Well, not to Phantom worry. Vision You're कौन in है? good hands because I'm a professional. The story goes like this. फ्री विश मिलेगा, एक सेकंड। 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Weasel. Nobody knew his true identity. Authorities never managed to catch him. फाउंटेन पे कहाँ जाना है? एक सेकंड। Precisely. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. I know. The phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor. But this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. Yeesh. So, did they catch him? Not exactly. A magician named Silk when the police went through. Sure enough, I had to squeeze through the crowd this morning to get a photo as soon as I heard it. Here. So, this is the warning letter, huh? But 3 days from now, when This is without it. But what seemed... uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even we might be targeted? But Simon doesn't want to get kidnapped. Well, he'd have to go through you first. You won't stop him, right? Okay, the people have spoken. It's clear that... Let's see. A photo of the letter, interview notes, something. प्लीज 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 मुझे पे विश करने देना यार, प्लीज। ये मैं कटसीन कब बंद करने वाले हैं? Concrete connection to the weasel. Is that who I think it is? Lenny! Magic. Magician. Caesar. The phantom weasel. That's it. Let's go interview Lenny. You see, the original phantom thief Caesar was a magician too. What do phantom thieves and magicians have in common? पाइमोन को हाँ हो सकता है। There is mystery about them. Perhaps there's a... Are you serious? पाइमोन वैसे अच्छी लगी थी उस आउटफिट में। Oh, relax. My journalistic instincts tells me that an exclusive news story is... प्लीज अब कटसीन बंद हो, मैं जाके विश मूँ भाई, फ्री की विश। फाउंटेन में कहाँ जाना था? अच्छा, इनमें किसके यहाँ कहाँ जाना है ये बताओ मुझे। इस पे? अच्छा, ओपेरा जाना है।
खोपेगा। अभी मैंने विश नहीं किया है। ओह ये क्या है? कुछ है तो कट सीन जैसा। ओह हाइट को क्यों ना ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे? हाइट, अब हाइट को वो ऑफर। थैंक यू भाई, मुझे पता नहीं था। जो मेरे पास एक और नया एरिया आ गया मैक्स करने के लिए। ओ भाई कितना कर सकते हैं इसको? 50 कर सकते हैं इसे भी। 50 कर सकते हैं। नाइस रेजिन्स। टिपन क्राउन करने के लिए क्राउन भी आ गया अपने पास। यार मुझे स्टार्टिंग में बता तो मैं और अच्छे से ग्राइंड करता भाई ये। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे चीची। ओके तो भाई मैं इसको कितना रिवॉर्ड इसमें पिंक वाला रिवॉर्ड नहीं देगा क्या? 10 पे देगा आई गेस। 10 में कर दूंगा, कल तक हो जाएगा। मैं 10 मुझे ये चाहिए, मुझे एक की भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। नाइस थैंक यू जियो भाई। इस वर्जन पे 20 तक ही जाएगा, 20 तक ही जाएगा। अरे हम 20 कर देंगे यार, बाकी बाद में होगा। कोई यहाँ पे कोई वो था वंग्ड क्वेस्ट था, वो भी करेंगे थे, एक्टिवेट करेंगे थे, बाद में करेंगे उसे। ये क्या है? हमें करना क्या? हमें चेस्ट तो ओपन करने हैं बस। फ्री में प्रीमोज मिलना है। नाइस प्लीज़ मेरे को वो मत कहना, कोई अच्छा सा क्वेस्ट देना। क्वेस्ट क्या है? कर सकते हैं हम ये। एनमीज मारने होंगे ना सिर्फ। ओके इनोमीस। डन। आ जाऊँ मतलब वंग्ड में। मैं स्टोरी क्वेस्ट करूँ अभी तो यार, स्टोरी क्वेस्ट करूँ मैं तो अभी। So long diving by, even come back. Yangan is my favorite number now. Yangan can having my favorite number this time. जो हमारे पास एक नया एरिया हो गया जिस पे हम आके ग्राइंड करने के लिए हमें नया पाथ मिल गया। हमें यहाँ जाना था, हमें निनी से बात करनी है और फिर हो सकता है थोड़े प्रीमोज मिल जाए। हम आइकन क्वेस्ट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आइकन क्वेस्ट में आज ही स्टार्ट कर दूँ एक्ट 3। हम हर 2 दिन में एक एक्ट ख़त्म करें ना, तो मैं 2 दिन में ये एक्ट ख़त्म हुए तो 2 दिन उसे भी लगेगा उस एक्ट को भी ख़त्म होने में।
Okay. Mr. Magician, how did you know which card I picked? Oh, it's simple. Come closer, and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if to say, no, I mustn't let him guess it. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. No, that's not a good habit. You can tell? Oh boy, you really can read my mind. Of course. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. All right. Hey, Lenny? Why, hello. Well, why don't you guess? Oh, please. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. You guys, on the other hand? Let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Wow, got it in one! Is this more of your trickery, Albert? Daniel, hi, कैसे हो? How are you, Daniel? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. I'm doing good, nice. So, Lenny, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. Angry? Why? You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing there. What are the chances? Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me. The icon quest is getting it. I am not doing icon quest, buddy. Then it's still going to be a huge hit. This is a story quest about Nanny. The mention of the weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Hello, I am new. Daddy Gaming by. Welcome. So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it. To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for... Looking for to promise me. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Buffering. Maybe my Wi-Fi is sucking again. I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference that these people overlook. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. It's gone! That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. A surprise? Let me see!
भाई उसकी मैजिक ट्रिक सच में वर्क करती है। What an outstanding trick! Sorry, Lenny, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to know if there was any deeper meaning behind this choice. Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this phantom weasel business is behind us. This brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time. But let's hope the phantom weasel is caught by then. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. So, Lenny, are you gonna tell us how you did that flower trick now? I'm afraid that's my little secret. Aww. Well, magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. You feel it too, right? So itchy. Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistants and help me investigate? Magician's assistants? Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians too. Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go first? The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the weasel? Well, that'll make things more interesting. It would mean that the weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. And if we're investigating Caesar, his fiancée Gemma is a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. Okay. गिफ्ट मंगाओ मेरे पास है यार कोई अच्छा चीज़ दे दे तो यार जो कभी काम आ जाए लेट मी सी बैकपैक में गैस मंगा क्या मैं एक रेसिपी मंगी है नाइस हाइड्रो क्यों है से अपने पास यहाँ से टीपी करना पड़ेगा ओके अब हमें ये पता है कि हाइड्रो कोइंस जो मिलते हैं हमें उससे हम विशेस गेन कर सकते हैं या फिर विशेस ले सकते हैं तो थोड़ा कॉशियस होकर हमें यूज़ करना पड़ेगा मतलब चेस्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते जैसे अभी हम इस चेस्ट को इग्नोर करने वाले थे क्वेस्ट की वजह से बट अब नहीं कर सकते बट इसमें कोइन नहीं होगा शीट मैं इसमें चेस्ट नहीं होगा ये अलग बात है इस चेस्ट में कोई नहीं होगा मतलब
नो भाई, ऐसे चेस्ट भाई वहीं पे अच्छी लगती है सुमेरु में, यहाँ क्यों दे वो ये चेस्ट? सिर्फ प्रीमोजेम्स और एक बिंगो पॉइंट। बिंगो पॉइंट वाले चेस्ट मत दिया करो भाई, मजा आ मुझे समझ नहीं आता बिंगो पॉइंट। भाई देखो इतने सारे हमारे पास फर्नीचर्स पहने से बनाने के लिए, उसमें तुम एक और बिंगो पॉइंट देगा। You took your time. Sorry, I bumped into the traveler in Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Lynette. We're working as Lenny's temporary assistants in the investigation of the Phantom Weasel. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Maybe it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around. यार इन्हीं दोनों से बात करना है उसके बाद भी। Excuse me, good sir. Gemma, you mean Caesar's fiance? I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. Yeah, she does. Poor thing. There's no secret why either. She's heartsick. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone, lost in thought. सर टेक Sometimes she talks to कैसे हो भाई? I asked her what she was doing once. She said she wanted to speak to him again. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is going. She's been doing this ever since Caesar passed away? Oh, so 10 years. Wow. Her love must have been really strong. I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual today. Well, that's everything I know, I'm afraid. I might have more luck asking some other people. All right, well, thanks for sharing all of this with us. We'll keep asking around. You're welcome. Did you hear the news? They're saying that Phantom Weasel's back. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean, what if this weasel's the real deal and Caesar was framed? Called it. Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, oh, that gosh darn lousy son of a, oh, you think you know a guy, or words to that effect. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Hello there. Sorry for disturbing. We're actually quite interested. You've come to the right people. He was a great... I was right up... I saw him sometimes. But after he died, there were, as I'm sure you... Whatever the case, now that the weasel is back, I bet Gemma... No, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it looks like she's injured. जेमा को डैमेज दिया किसी ने, आई मीन हर्ट किया किसी ने, डैमेज कैसे देगा, मशीन तो नहीं। Hi there. You're Gemma, right? Who's asking? Don't be afraid. We
bad is it? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you? What do you want with me? My name is Lynn, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So, if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, I never believed that he was the Weasel. Huh. I suspected as much. Okay, so going back 10 years, do you remember anything strange in the weeks leading up to the accident? Did Caesar have a falling out with anyone, for instance? No, not that I know of. Got it. All right. Sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. शीनी क्या है भाई? Judging by the look on her face, there's definitely something fishy about her. She's lying. She definitely knows something. That's fair. We're just a bunch of strangers who showed up and started questioning her about things that happened a whole decade ago. It makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. Meet me outside Hotel de Boer tomorrow, and then we'll start the next step of our plan. Okay. शॉप भाई, मैं गलती से भी इसको ना इस पे वेस्ट ना कर दूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसे बना के छोड़ देते हैं। अब हमें 8 से 12 बजे तक वेट करना है। हमें कहाँ जाना है? 8 से 12 बजे तक जाना कहाँ है ये तो बता दो। वो सामने एक चेस्ट है, नाइस। हमें चेस्ट मूटनी पड़ेगी बहुत सारी, ताकि हम अपने, अब यार इसमें भी कॉइन ना है, बट मैंने अटैक मिस कर दिया। ये कैसे होगा एक्टिवेट? हो मे बी हमें ये चाहिए। हमें ऑरेंजेस भी उठाएंगे तो दबा के तो नाइस। हैं? इधर भी एक चेस्ट है। आई डो कॉइन जैसा कुछ तो दे। ओके, हमें वहीं जाना चाहिए होटल पे ही।
फाउंटेन। Time to go. एडवेंचर गिल्ड में हमें क्या हुआ, कुछ हमने प्रोग्रेस की है क्या अभी तक? क्या तो है टाइम चेंज हो। नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट करना पड़ेगा। Time to go. Tch. Over here. Lynette's not joining us today? I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be at a cafe right now. Still, I don't think that Gemma's likely to open up to us. Today, we'll be looking into a guy named Lorenzo, Caesar's former pupil and assistant. When Caesar passed away, all the stolen goods discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. Before long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned though, I hear he's got a hair-triggered temper. We'd best be careful. Time to go. You neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. My apologies. These 2 are my assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. And if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Oh, forget the pleasantries, just sit. Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks pretty happy about Lenny stroking his ego. I only agreed to meet since we're both magicians. Do me a favor and cut to the chase. I have more important things to do than drinking. Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. Yesterday morning, a warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do a magic show there. As such, I believe that I may well be his target. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about Caesar, who... What is there to investigate? Caesar was the Weasel and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. I do concede that a copycat is but one possibility.
Possibility? It's a fact, Linny. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. Look, if this affects your magic show in any way, I will personally compensate you for any losses. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head-on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me, what exactly are you seeking to do? I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know for myself what really happened 10 years ago. What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you, anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your magician's pride, then you'll forget about Caesar and move on. Uh-oh. This is getting awkward. Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. What's up, my man? Want to grab a drink with me? Another day, I'm busy. Oh, come on. You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast, die young. You gotta learn how to kick back and relax once in a while. If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. He and I are business pals. We worked together a bunch of times. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed, never heard a kind word. And he wonders why he can't get a girlfriend, despite being, what, pushing 40, 30, something? Anyway, point is, a lot older than when he first got rejected by the girl he was into. And he's still into, from what I hear. Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Sorry, I may have had a little too much to drink. All right, I'm gonna leave. Don't work too hard. I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Linny, be my guest. But if nothing good comes of it, don't say I didn't warn you. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would someone you just met make an offer like that? He's gotta be hiding something. And not like Gemma. She was a little suspicious, but this guy's definitely covering something up. I think so too. We need to look into Lorenzo more closely. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. He only just left. Let's see if we can catch up with him. You okay there? Who are you? Oh, it's you guys.
Don't worry about me. I said way too much back there, didn't I? Yeah, I nearly talked myself into complete financial ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around. So, he was serious about threatening to cut you off? Ugh, Paimon knew he was a bad egg! Hey, keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions, or make an enemy out of him. What kind of bad things? Don't even ask. I'm sorry, I'm gonna have to cut this conversation short. I'm not crossing that line again. And take it from me, trouble with Lorenzo is one thing you don't need in your life. You saw him flare up back there. I don't know what you said to him, but clearly it touched a nerve. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. हाय संजय, कैसे हो? गुड नाइट है। And there he goes. What do we do now, Lenny? Shh! I think we're being watched. Someone was listening in to our whole conversation. Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We'd better take this elsewhere. हेलो प्रभव, कैसे भाई? अब प्रभव तूने फाउंटेन चेक किया क्या? एक सेकंड में तो कुछ चेक दिखाता हूँ। मैं तुझे कुछ शो करता हूँ, जाइए मत, एक सेकंड हो जाइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डेंडो क्यों मारा है, उससे उठा लेते हैं। आंटी म्यूजिक मत बचाओ। डैम भाई, पता नहीं मैं क्यों इरिटेटेड हो गया आज। डार्कस्टार बाजी वो प्रतीक भाई कभी कभी ना। हाँ, मैं तो एक चीज़ शो करता हूँ। इस पे जाएगा तो ये देख, इस पे जाएगा तो इस माउंटेन ओपेरा पे जाएगा प्रभाव। मेरा तो नहीं हुआ यार, तेरा क्यों हो गया? ओपेरा पे जा तू, यहाँ पे यहाँ पे तो अपने वो दे सकता है हाइड्रो कोइंस अपने विशेष के लिए। मैंने जस्ट अभी किया है, 5 हो गया मेरा एवं 2 विश 1 रेजिन। तुझे यहाँ से रेजिन्स हो वो भी मिल जाएगा, फेथ भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बंग्ड क्वेस्ट है यार, ये भी देख नहीं थे क्या कर रहे हैं ये।
अभी हम स्टोरी क्वेस्ट कर रहे थे नैनी की। भाई मैं जो कर सकता था सब किया मैंने भाई। करेंगे यार, फिक्स तो करना उसे भी। अब यार मैं स्टोरी क्वेस्ट करते साइड में क्वेस्ट कहाँ से आ गया। स्पीड टेस्ट करना पड़ेगा भाई, रुक जा। अभी तो करने का फायदा नहीं है। जिटर तेज स्टेबिलिटी बताता है, वही भी चेक करना है यार। ये क्वेस्ट हो जाए उसके बाद कहते हैं। वो बता प्रभव, हाउस योर डे भाई। बहुत हो जाता है भाई, बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है इसको। अपना क्वेस्ट पे वापस आते हैं। तेरे पास कॉइन तो होंगे ही, मेरे भी लेवल 5 तुरंत हो गया। इतने कॉइन तो तेरे पास होने चाहिए। ओके सामने 2 चेस्ट है यार। अच्छा देख, So you're Liddy. And where's your sister? Ain't she with you today? Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Save your questions, missy. You ain't gonna need answers later. Capiche? Looks like we can't avoid this fight. भाई नहीं ट्राई करना मुझे एक बार। So I hope you're ready to back me up. उसको मैंने मैच्योर बनने होगा। मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है, मेरे को यंगान और इसका कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। ओके Now disappear. Quietly now. ओ तो क्योंकि अभी उसकी स्टोरी क्वेस्ट चल रही है। यू Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. Come on, let's scram. Hey, wise guys! We ain't through with you yet! Oh, they got away! Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. अच्छा तो ये अगर मैं स्टोरी क्वेस्ट नहीं, मैं उसका मूव देखा था कि मूव उसके मैचअप हो सकते क्या एक दूसरे को कंबाइन वेपराइज टीम के लिए। You're right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had... मैं नहीं पूछूंगा भाई, मुझे जोंग निकालना है। Maybe she was too scared to tell us the truth because those guys had threatened her.
डिनर टाइम फॉर मी। क्या बनाया तूने आज? Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her. यानी 1.8 मिलियन डैमेज करे भाई। मैं नहीं करूँगा, मैं तो जाऊँ भाई जोंगन निकालना भाई, नैनी पैनी को नहीं निकालना भाई। आई डोंट वांट हिम। और यहाँ पजंग आ गई भाई, नाइस। एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ है। सबसे नेट ये आता है, ठीक है, 1 2 and 3। ओके 1 2 3 ठीक है। 1 2 and 3 डन। ये ऐसा होता है क्वेस्ट, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। पता है वो। इसमें हाइड अप नहीं होता क्या? वो आखिरी कौन सा बचा है? स्ट्रीम बफर हो गई यार। मैं कैसे कहूँ भाई, यही तो दिक्कत है। क्या कहूँ पापा यार, मैं तो इससे इस चीज़ से ना दिमाग खराब हो गया। हर चीज़ ट्राई करके देखेंगे भाई। ये 2 चेस्ट है जिन्हें मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता। नहीं, हाइड वेप नहीं हो सकता ऐसे। चेक कियो इंटरनेट। अच्छा यही बच्चे में उनका वो बचा है एनिमीज। आजा आजा इधर आजा। भाई आज इरिटेट कर दिया भाई डार्क स्टार आज जो प्रतीक ने यार, पता नहीं। मैं भी आज का दिन ही खराब है भाई मेरे। वो ऐसे ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे टॉपिक्स को करते ना। हेड वर्क नहीं हो सकता। ये सब तो मैं उठ चुका हूँ ना। यंगान तो ओपी है ही यार। यंगान अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा यार, तब जाके ये ओपी हो जाएगी। मैं पता है मेन निकाला था यंगान को अंगहितम के लिए, और मुझे समझ आ गया भाई यंगान अंगहितम के अलावा भी बहुत अच्छा कर सकते हैं।
भाई तुझे भी मजा आता है तो इनोसेंट मत बन। अरे नहीं, मजा की बात नहीं। देख प्रभाव भाई, देख अगर मेरे, देख हम जो मजाक करते हैं जैसे मैं तू जो करते हैं, तो उसमें हमारे फ्रेंड्स का या तेरा या मेरा नाम इंक्लूड होता है। भाई वो किसी रैंडम पर्सन का नाम ऐड कर रहे उस चैट में, और वो भी देख अपने बारे में कहना या मेरे बारे में कहना समझ आता है। वो तो मैं ऐसे किसी पर्सन के बारे में कह रही हूँ जिसको इसकी किस जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऊपर से उसका नाम ऐड कर रहे हो, और जिसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आगे जाके भाई बाकियों को भी दिक्कत आती है भाई, आगे जाके कोई और यूज़ करने। और प्रतीक तो जब तक कर रहा था तब तक तो मैं समझ आ रहा कि हाँ भाई मजा आ गया। पाजी डायरेक्ट आके नेम वेम टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं भाई। मैं तो चला गया था इसलिए मुझे नहीं पता। वही तो यार, ये ओवर हो जाता है भाई। कभी कभी तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। तेरे स्ट्रीम में टाइप किया गया, हाँ वही यार, यही तो मेन दिक्कत है। प्राइवेट पर्सनल में समझ आता है, या फिर तुम रैंडम नेम से ऐसा कुछ टाइप को जो कि एग्जिस्ट ना कर दो। वही तभी तो वही मेरा मेन गुस्सा उन्हीं के ऊपर तो दिमाग खराब हुआ है भाई, कि भाई देखो ट्विटर तक तो मुझे समझ आता है भाई कि मजाक चल रहा था, बट यार वैसे किसी को ऐसे नेम ऐड करना, वो भी अननोन पर्सन का, यार वो अच्छा नहीं समझा। आ गया कंप्लीट मारो संग। अरे नहीं, प्रतीक की गलती नहीं यार, प्रतीक ने तो सिर्फ वर्ड्स टाइप किए थे जिसका कोई मीनिंग बना नहीं सकता था, पर डार्क स्टार पाजी ने ओवर ही कर दिया भाई उसे। प्रभव चिंग आउट, ब्लैकलिस्ट स्पैमिंग। भाई प्रभव को ब्लैकलिस्ट कर दिया भाई नाइट बोट ने। शिट, वो सारी चैट डिलीट कर दी क्या प्रभव की? ओ डैम भाई, सॉरी प्रभव भाई। ओके ये कितना क्वेश्चन बचा यार इसमें? प्रीमोस तो अभी भी नहीं दे रहे। यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं है चैट यार, पता है अजीब है भाई। देखो सिचुएशन तुम क्रिएट करो ऐसी, और बाद में मुझे आंसर करना पड़े यार। तुमको क्या है, तुम तो कह के चले जाओगे। डार्क स्टार पाजी को मैंने बहुत बार ये चीज़ के मना किया, बट वो नहीं मानते हैं भाई। हम दोनों के नॉन पर्सन हैं जो हमें अभी भी बात करते हैं भाई। मैं तो स्ट्रीम से चला गया था, मम्मी ने बुलाया था। क्या उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं है, उनको बहुत से। आई थिंक मुझे ना थोड़ा सा कट आउट रखना पड़ेगा उनके साथ। हर चीज़ ऐसे ही ओपनिंग ही नहीं कर सकते हैं। पायो रिकमेंडेड। ओके जीएस भाई कैसे हो? हैंगओवर प्रभाव भाई को यार सब के सब। प्रभाव डमगम को मेरा बहन बनवा दे। अरे अच्छी बात है यार। और यार पाया था तो यार ये बहुत भाई बहुत गंदा सीन लगता है मेरे को इनका, जब ऐसा स्कैम होता है। मैंने यंगान छोड़ा इसकी वजह से। डैम यार प्रतीक ब्रो
भाई कमेंट देखो उससे पहले। नाइट बोर्ड ऑन कैसे करते हैं भाई? नाइट बोर्ड ऑन के तुम्हें नाइट बोर्ड की वेबसाइट पे जाके करना था। नाइट बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें नाइट बोर्ड को वहाँ पे एक्सेस देना पड़ता है तुम्हारे यूट्यूब का। उसके बाद पायो ही यूज़ करना पड़ता हो इसमें। भागा। कुकी भाई यंगान मेरी रह गई। मैं इतनी देर से उसका अपने स्टैंग ट्राई कर रहा था। तुम Look, the doll in the box is glowing. अब क्या है? There's something written on the card on this doll. Let's take a closer look. एक सेकंड, कुछ है क्या इसके हाथ में? मुझे लगता है ना वाईफाई एक्सेस बंद करना पड़ेगा। नेविंग कैसा गेम करने में? ये अचानक से प्रिंस ऑफ पर्शिया की वाइब कैसा है ये गेम से? पता नहीं भाई, म्यूजिक तो उसी का है। These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. अरे यार, मैंने इसका एम क्यों एक्टिवेट किया भाई? Got it. We're supposed to find the box that lit up at the start, right? There should be another wish list inside. Let's keep trying. अब इसको सेम है, इसको भी ऐसे करना है क्या? ये वहाँ का हुआ है मीटअप। अब इसको ट्रेस करना है बस। डन। हाँ, कभी तो मन करता भाई स्ट्रीमिंग छोड़ के वापस वीडियोस पे फोकस करो भाई। एटलीस्ट में बफरिंग का टेंशन तो नहीं रहता। That's weird. Have we reached the end already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe अबे नहीं, बफर हो गए। बफर हो गए भाई। if I just move this book, hopefully, and presto. A secret passage. I'm a magician too.
great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. और कोई चेस्ट तो नहीं है यहाँ पे। भाई बफरिंग का दिक्कत दिमाग खराब होता है। अगर मैं ऐसे इशू है ना भाई, मजाक कर के मैं वापस से वीडियोस पे शिफ्ट हो जाऊंगा स्ट्रीमिंग ऑफ करके। भाई ये मैं माइंड इरिटेटेड हो गया पता है आज। Is there some device in that box? It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. All right, see you in a bit. एक मिनट चेक कर दो यार, ये क्वेस्ट खत्म, मतलब ये डोमेन से भाग जाऊँ उसके बाद। डोमेन से बाहर जाके करता हूँ यार चेक। Seems like we can't step on the same tile twice. Guess we've got to finish it in one run, huh? अबे यार वापस कर। भाईमन कुछ कहियो मत तो आराम से। हाँ वो चेक करना है मुझे। डन। आ गई। ओ मैं सोचा मैं फिर आ गया, फिर से करना पड़ेगा क्या भैया? नहीं नहीं सही बात। इस डोमेन की बात करते हैं यार। Next. Two children. Anyway, I told them. It seems like surely I have a good. They have all. They wanted to come with time. Gemma thinks it's nearly time. I want to. It's only that they're very. They hide. That's the thing. I can send after think PS, PPS, comes. Magic geniuses with a father and a mission, huh? Sounds a lot like he was writing about Linny and Lynette, don't you think? ओ मेरे दिमाग में यही आता है जो पैमोन ने कह दिया अभी। So did they meet Caesar when they were
मैं गिनी और गैनेटिंग की बात ही सोच रहा था मैं जब इसने 2 मैजिशियंस का Hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Oh no! so that you don't get buffered by Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really picture it. And then what? The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically. The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall. Not without a vision, at least. And no one else has ever attempted this trick since. So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person. Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Glad you asked. That brings us to the secret of said box. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Once the magician's inside, and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. He then escapes through this trap door onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. That's way simpler than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. Well, there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship. There's the falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking. Caesar was a highlight. So, I can make a I looked into the case files. okay. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here. Because a magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will, so as to avoid arousing their suspicion. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth would end so, Caesar trained himself to use his right, but in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. Exactly. I think that's likely what happened. Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the
a secret door and make a swift, but I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on. Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. With the stakes being as high as they were, just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. In reality, someone switched the boxes, and they did it to murder him. But how would they be able to make the switch? अबे हो ये बफर यार. That would be difficult to pull off, no? It would have to have been someone who knew that he was left-handed and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Isn't that right, Lorenzo? Just couldn't let sleeping dogs lie, could you? There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. But I gave you your chance. I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappoint me. You mean Gemma? So you were the one who's been threatening her? Yes, although, which is why I can't leave this. अरे यार. And voila! I'm going in! चार्ज अटैक हुआ बस. अबे यार मेरे को एगो वांग कैरेक्टर इतने घटिया क्यों लगते हैं समझ नहीं आता है. यंगान का अगर पैसिव अटैक ना होता ना, पैसिव क्या हो, उसके अटैक्स नहीं होते ना वो, तो मैं यंगान पुंग नहीं करता. Here comes the finale. Teamwork is dreamwork. Our bond is strong. अबे यार मैं वो भी यूज हो गया. ओह डैम भाई ये सही था. Had enough yet? I think it's high. He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me. तो ये जंगता था उससे. Jealousy. Hatred. ओ भाई I hated Caesar. All he cared about was his magic. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just... The people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. So amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. He forbade me from using magic to trick people out of their mora. There was nothing he hated more than that. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money
expose me, and it would destroy me. I had to kill him. There was no other way. And this was... It was reason and Well, I was under... in love with Gemma. Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Caesar was so strict. I never bought into any of that. Oh, yeah! That's just how it... I still cheat. So, that's the... What choice do I... So be it. Very well. Traveler, pilot. Keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. भाई स्ट्रीम जो चेस्ट है अपने पास mau 1 10 primos jangan papi एसेंशन किंग इसको क्या चाहिए अब ओके ये नाइस जो हम नीव कर सकते हैं ना कोई एक गुद्दी चटका तो थोड़ी सी स्पीड टेस्ट करते हैं प्रभाव अभी है तू बता अब क्या करना है बता भाई मैं इरिटेट हो गया हूँ भाई आज प्रभाव क्या करना था बता भाई अरे यार Lily has told me the whole story. Lorenzo, do you confess to the murder of... Look, what kind of disciple murders their own master? I thought it was brilliant. Looks like it's all over. What should we do next, Lenny? Should we... Let's rendezvous with Lynette and Gemma. Good point. ओके इधर प्रिमोस का वो होगा अभी भी प्रिमोस का क्वेश्चन नहीं दिया है इसकी स्टोरी क्वेश्चन कितनी बड़ी है भाई नैनी की आई गेस ऊपर यार हमें ओके हमें ऊपर जाना है यहाँ से बट उससे पहले हम ओपेरा पे वो क्या थे विजिट देखे पूरा भाव शिट हाँ इधर ही है ये मेरी नेक्स्ट फेवरेट नहीं सुने होंगे फाउंटेन में चेस्ट ओपन करना कि तुम रिवॉर्ड कनेक्ट कर सको चेस्ट में वैसे ही प्रीमोज मिलते हैं आप उसके बाद तुम यहाँ से रिवॉर्ड्स ले सकते हो उन्हीं चेस्ट से मिली हुई करेंसी से तो भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है 10 एसेंस 5 करना पड़ेगा नाइस It's time to pull the trigger. Yangan I really missed you Yangan artifacts मेरे को CR CD चाहिए ना तेरे इसको अपग्रेड करने पे CR CD देगी क्या तुम प्लीज यही 2x वैल्यू कभी दे देगा भाई दिया ना आप प्रभाव में ठीक हो भाई
ओ किट 8 दिया। ओ यार किट 8 नहीं, किट डैमेज चाहिए था मुझे भाई। डिफेंस प्लीज किट 8 दे यार। किट डैमेज चाहिए था मुझे थोड़ा सा भाई, मेरा परसेंटेज सही हो जाती है यार। ये 61/100 का क्या परसेंटेज है भाई। आई एम फीलिंग सैड भाई। और एक तो ये पता है मेरा दिमाग खराब हुआ है। तो तेरे इंटरनेट को क्या हो गया यार? अभी सही चल रहा है भाई। तभी अनमोल भाई मेरे को सबसे ज्यादा कोई ना मिल जाएगा यार, ये तो है। You're so quick. You heard? That's fine. I'll shift to exercise mode and drop down. That's besides the point. Did everything go okay? Of course! Lorenzo was no match for us. The guards are taking him into custody as we speak. Gosh, that's amazing. I'm sorry. I still didn't know if I could trust you, but now it seems I can. I had my suspicions about Lorenzo, but It's okay, you don't need... डोंट क्राई। I was so thank you all. तुम्हारा इफ़ यू नीड समवन, हमारे पास प्रभाव है जो तुम्हारी केयर कर सकते हैं। दोनों की बात है, प्रभाव थोड़ा सा नूब है इन सब सिचुएशन में, बट स्टिल Clearing Caesar's name. I never would have guessed that Lorenzo was the real. To think, at least his soul. Don't blame you. Cheer up, Gemma. मैं शुरू से खेल रहा हूँ स्टिंग। आई डोंट हैव बेटर आर्टिफैक्ट्स ऑन कैरेक्टर्स। चैट नहीं कर रहा मैं, और We're holding it in Caesar's honor. चैट नहीं कर रहे पति भाई क्यों? In Caesar's honor. Great. We'll see you tomorrow evening. Travel, Paimon. Don't be late. Don't worry, we'll be there. No way are we gonna miss out on the free magic. Wait, Paimon feels like we're forgetting something. ये तो प्रीमोस का होगा ना यार। ये प्रीमोस वहाँ कब आएगा? ये बहुत बड़ी स्टोरी क्वेस्ट है क्या यंगान की? Lenny changed the topic back in the workshop, so we didn't... भाई 3 चैट मिस हो गई यार। फिर से टाइप कर दो पति भाई। मैं इंटरनेट ठीक करने मंगा था उस टाइम। मैं तो अब बस स्ट्रीम पे सुन रहा हूँ, चैट नहीं कर रहा मैं। और 3 चैट मिस हो गई क्या? यही तो 2 चैट तुम्हारी देखी मैं। स्पीड टेस्ट किया तो था। मुझे क्यों लगा अपलोड स्पीड में कुछ दिक्कत आएगी।
यार इसके बाद भी दिक्कत आ रही तो मैं दिमाग खराब हो गया भाई। फिर से टेस्ट करेंगे देखो। भाई कहाँ है प्रभाव? मैंने उससे पहले 2 बड़े बड़े चैटिंग किए थे भाई, वो मैं देखा नहीं। एक तो ये भाई प्रभाव, और कौन सा टेस्ट करना था? प्रभाव गया क्या? इंटरनेट स्टेबिलिटी टेस्ट। ये कैसे टेस्ट चेक करेंगे भाई? ये नहीं कर सकते, उसका वेबसाइट ही नहीं पता भाई। ओके ओके मैं समझ गया भाई। ठीक भाई ओके ओके। इंटरनेट स्पीड तो सही दिखा रहा है हर बार 200 प्लस था। डांट पड़ेगी वो। नहीं इंटरनेट स्पीड तो 200 प्लस है हर बार यार, अपलोड डाउनलोड दोनों ही। फिर क्या दिक्कत आ गया है? मे बी टर्निप इशू देगा क्या? आई गेस टर्निप का इशू है। टर्निप का ही इशू है भाई। एक सेकेंड। पर यार मैं टर्निप को बंद भी तो नहीं कर सकता। टर्निप को ऐसे बंद करूँगा तो वो होगा ही नहीं। टर्निप का इशू है भाई। तो प्रभाव टर्निप का इशू आ रहा है मैं आई गेस। भाई मैं अब की बार कंग से मैं उस पर कहूँगा यार। वीसी नहीं कर पाएंगे हम, बट हम उस पर करेंगे अपने स्टूडियो से। मैं टर्निप को क्विट करना चाहता हूँ अभी के अभी, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा वो। नहीं सुनो टर्निप की वजह से नेट स्पीड फ्रैक्चर करती है और वो सभी का करती है एक पॉइंट के बाद। भाई मैं भी स्पीड टेस्ट करके आया, 1 ms जिटर आ रहा है। कंग से मैं उस पर कहूँगा, स्ट्रीम ऐप से कहूँगा। मैं अभी स्विच कर दूँ स्ट्रीम ऐप पे, मेरे पास ऑप्शन है, बट मैं करना नहीं चाहता। बिन बात का झंझट है। थंबनेल राइट को वापस से सब कुछ कॉपी पेस्ट करो, ऐसी सिचुएशन हो जाती है भाई। भाई मैं चीज बने चाइल्ड को क्या किया इन्होंने यार। चाइल्ड को जो मारा है ना भाई, मैंने आइकन क्वेस्ट कंप्लीट होते ही नहीं किया उसको। मैंने सेकंड थर्ड फेज में स्टार्ट ही नहीं किया आइकन क्वेस्ट का। मुझे चाइल्ड को पिटते हुए देखने के बाद मैंने चाइल्ड यार अच्छा कैरेक्टर यार, ऐसे कैसे पिटते देख सकता हूँ उसको। आई डोंट नो हाउ टू यूज स्ट्रीम ऐप। मैं समझा दूंगा प्रभाव तुझे। माइक को यार, बट उसमें एक ऑप्शन है
अरे स्टीम ऐप पर पता है थोड़ी सी दिक्कत है उसके अंदर। तुम्हारे पास शटर का ऑप्शन नहीं होता, मेन शील्ड का ऑप्शन नहीं होता तुम्हारे पास माइक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं होता है तुम्हारे पास, इस लेटेंसी या फिर बिट रेट सेट करने का ऑप्शन नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। तुम्हें हर चीज़ करने के लिए स्टीम ऐप को ऐप ओपन करना पड़ता है। जैसा अभी हमारे पास ये सारे ऑप्शन है ना नीचे, उसमें ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। एज अ चाइल्ड मैन आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। भाई यार चाइल्ड है यार, क्यों भाई? Not this time. My brother's going solo today. भाई So, I'll be watching with you. मैं चाइल्ड निकालना चाहता हूँ, मैं जोंगे निकालना चाहता हूँ, बट प्रीमोस नहीं है। मैं यार यही फीलिंग है जो वेग करने पे मजबूरी कर देती है, बट ऐसा करना नहीं है। ये सेम ही मैजिक ट्रिक तो नहीं करेगा जो अभी हमने किया था, देखा था। आई मीन स्टीम ने कुछ क्या ही मांगू मैं। स्ट्रीम ऐप में डिस्कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये है कि हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं ना यहाँ पे माइक्स के और बाकी चीज़ों के, पे भाई तो पांचों बंदे माइक करो जो भी देख रहे हो, उसमें ये सारे ऑप्शन नहीं होते। तुम्हें अचानक से कोई काम पड़ा तुम शील्ड यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने स्ट्रीम ऐप को ना बिल्कुल पीसी वर्जन को ही फ़ोन में एक्सेस दे दिया है बस। उनको फ़ोन के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर तो देने चाहिए थे। कौन सा बैनर पे स्पिन मारना है, जिस पे तुम्हारा मन करे प्रतीक भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे। Well, I was out on the street once and I saw him performing for little children. Children love magic because they're willing to believe in things that can't be rational. नहीं होता तुम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। Amazing way of bringing them into a dreamlike world. And somehow I don't know, मुझे देखना पड़ेगा। So I went up and asked him to do a trick for me. That sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। Snapped his fingers. क्या चीज़ अच्छा नहीं लग तुम्हें? Magically appeared on my head. तुम किसी भी कर सकते I हो। was so happy that day. No one had ever given me a flower before that. Oh, that's so cute. यहाँ पे कहूँगा बिंगी वांगा कैरेक्टर जो है, You mention it. Lily's done that one before. Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. After all, you never know when the people dearest to you might be gone. That's right. It's all over now. Paimon doesn't really know how to comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now on. You can breathe easy at last, right? Right. Yes, you can breathe easy now. Phantom Weasel. See? Even when that's just... Wait, what? The Phantom Weasel? Lorenzo escaped? Where is he? What do you mean, Phantom Weasel? As Lenny once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. The spotlight is no place for someone with no more cards up their sleeve. It's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grief उसका of बहुत my कुछ life? पता है, I अच्छी think it's बात है। time to put an end to it. What are you talking about? Paimon doesn't like this riddle. Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something. Ladies and gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission, after which Linny will perform the most electrifying act of tonight's show, the one we've all been waiting for. The final performance will take place outside of the Opera House, so please make your way outside in a calm and orderly fashion. Phantom Weasel never did like public places, did they? Don't worry, this place will be quiet soon. Let's talk somewhere else for now.
अपन खाना खा के आए। ओके बदी भाई। मैं पानी भी निकाल दूँ, एक सेकंड। Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. This is a big mistake for a magician to make, but thankfully, I do have a backup plan. Now, who wants to hear a story? Lenny, don't we have more important things to address right now? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? All in good time. Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask. Really? Well then, let's hear it. हुटाओ आने वांगे by the way. Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine, she never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day she ran the risk of being exposed for who she was. Of course, she could not simply take this lying down, and before long she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. At her encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing 4.1 में सर मुंबई तुम्हारे हिसाब से क्या है? Two co-conspirators committed the perfect crime. हुटाओ एंड वेंटी. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. What's brought this on, Linny? Is it something that Lorenzo said? Don't worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession, as if there was something else he was trying to hide. How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me, even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want, and I have no doubt that you, Gemma, are equally talented in this regard. With a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancée, whose devotion to her betrothed is unshakable, even under threats of violence. Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you, everyone sympathized with your plight. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. Wait, so you mean the whole intimidation thing was just a hoax? Gemma and Lorenzo were both in on it? Restoring and Nobana coming in phase 1 and 2. As per Nick 4.2 update Hydro icon banner and आने वाली है. Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. Well, Linny, if you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious. Having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt.
Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the Weasel remained free, then she could take care of Lorenzo's loved ones. An excellent answer, though sadly a little dull. Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change the topic to something more interesting, I'd be much obliged. As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real Weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Of course. After all, we're just telling stories here, aren't we? If I had to guess, I would say that the real Weasel must have had a terrible childhood. Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink, and this was her only source of happiness in life. But it was once again she was betrayed. And this time everything was taken. मैं देख तो चुका, मैंने बता दो तुम्हें. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. At that tender age, she should have been happy. Instead, she stood in the shadows and watched with envy as all good things in the world passed her by. This was a fate too cruel for anyone to bear. यही तो चैट है तुम्हारी. Became breeding ground for dark thoughts. उठाओ इन्वेंटी का भी नीक था, बट आई गेस वो दोनों शायद नहीं आएंगे. I detest the happiness of others, in all its forms alike. I will rob them of everything they hold to be good and true, and it will fill the void in my soul. That's some pretty heavy stuff. उठाओ इन्वेंटी का क्या सीन है? वो आएंगे कि नहीं आएंगे? Does this story satisfy you, Winnie? Yes, it is quite to my tastes. Thank you for helping to clear up my confusion. That's right. What drove you to write that letter, Gemma? What were you trying to achieve there? Because without that, none of this would have ever come to light. She didn't write the letter. After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. But it seems like someone still wasn't ready to let her finally be at peace. Maybe. Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. And why? Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. Oh, that's it? You had no other agenda? Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death? You met him? Wait. Oh, I get it. You were those two obnoxious kids. It's been so long. You're all grown up now. I didn't recognize you. गुड नाइट अनुमोंग भाई. Magic back then, didn't he? गुड नाइट. What, टेक केयर. 10 days or something? We remember all our debts, however great or small. मैंने 10 खाऊंगा. years ago, Caesar's reputation was torn to shreds, नहीं. and his ये नहीं legacy खाएगा. was thrown नहीं. out. रोटी भी नहीं. नहीं. 10 years on, and no one cares what the truth is anymore. But we did not forget, and so we came to find you. And what exactly did you take from me? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has admitted to everything. चैट थोड़ी डींगे है वो. I'm ओके. Free? Do you really think so? Caesar once told me that even though
lies and falsehoods, we must find our own truth. I think that applies to you too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, an irreplaceable people. चैट यार धीमे जाती थोड़ी बहुत. Life took many things from you. Those wounds never healed. When they ached unbearably in the dead of night, stealing became your way of numbing the pain. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole. Back to Lorenz, he knew who you're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. But that truth is gone now. And I guarantee you, you'll never see it again. Congratulations on your freedom. Jem, your freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and falsehoods. I do hope you'll be able to bear it. You've still got a long life ahead of you after all. Gather round, one and all. The time has now come for the amazing Lenny to perform his final act in tonight's show. I'm sure you're all wondering. A high-altitude escape! I'm sure you all remember the magicians that we have now learned that. I guess that's my cue to leave. Traveler, Paimon, I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight, but you alone are my true witnesses. Lenny, wait. You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? Are you an open book? Or are you still the same as ever? You don't have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. You're wrong. I'm nothing like you. So, what are we, doing now? Like Lenny said, when you're ready, let's head outside and watch the show. What about Gemma? She'll figure out what's best for her soon enough. Oh, and if you'd like to see Lenny after the show, you know where he'll be. The usual haunt. Alright. Well, let's go and watch Lenny's finale then. Okay. ये करना पड़ेगा. Magic should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's alright. We're used to that. We're sorry. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. I only hope that one day, you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lenny is sealed inside the box. Will he manage to escape?
10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Watch out! Mysterious. Surprising. And logic-defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. I'm just sorry it's a little late. Did you see that? 1 minute he was falling, and the next, he turned into flowers. How could he possibly have done that? How mysterious. I didn't blink once. He just vanished, right in front of my eyes. What a heart-stopping magic show! This was really worth the trip. Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's new star magician Linny has fulfilled a wish on his behalf. Oh, I couldn't ask for a better grand finale. It will make a great headline for the Steambird tomorrow, even if I do say so myself. Whew. Looks like everyone really loved Linny's grand finale. Paimon doesn't see Linny anywhere. Where'd he go? Oh, Lynette said he'd be waiting for us at the usual hunt. But, oh, you mean the one where Caesar's buried? Yeah, that's probably it. Alright, let's go. Are you alright? Paimon was scared. Magic is a performance art. A magician has to get creative to keep the audience on tenterhooks. That's our job. So I tweaked Caesar's original setup a little to keep it fresh. I was honestly a little nervous during the live performance. The thought of falling, suddenly feeling weightless, seeing the sky and the ground spinning and spinning. Sometimes, I can't help but wonder what Caesar thought in those final moments. Did he regret taking Gemma and Lorenzo on? You know, Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned magic from Caesar once, didn't you? After I joined the House of the Hearth. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. I told you about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning magic from street performers. I'd watch their tricks and try to figure out how they were done. But I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance, but the rigorous training they put in behind the scenes remained invisible to me. I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make niftier props. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves, but without proper guidance from a professional magician, we quickly plateaued. So that's why you sought Caesar out? Yes. We figured there was no harm in asking, but it took us by surprise that he was so willing to teach us. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so many things from him. For instance, when he asked why I wanted to learn magic, I answered, it's my passion. But in truth, there was already a lot more to the story by then. After being taken in by an aristocrat for our magic talent, then betrayed soon after, this
this was no longer about me doing what I loved. What amazed me was how the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. Trust is a beautiful thing. Sadly. Still worried about the way I feel? You really are a gentle soul, aren't you? But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the... After Caesar went on that night, to keep secrets is to put up walls. The longer you only realize how much someone really meant to you when you lose them completely. Yeah, cheer up. We've had the same delicious food. You know, Traveler, doesn't that kind of... Exactly. It's the same for me and Lynette. We are the truest thing each other has in the world, and nothing can replace that. Life has taken plenty from us, like it did from Gemma. But at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me, and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. All right. It was amazing. Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are decidedly card-free right now. Aw, come on! Surely you can think of something. The Lenny Paimon knows can do anything if he puts his mind to it. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because it's you. Watch closely. I have a flower in my hand. You liar! There's nothing in your hand. We ain't going along with this. Huh? My goodness, you're right. But I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down with me. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. Really? Let's see. Wow, there it is! Oh, this is a different flower from the last time, right? This one's called, oh yeah, a rainbow rose. But more importantly, Paimon has to know how the trick is done. Please, Lenny, pretty... Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Fine. Please, teacher, please. Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the student of magic cannot solely rely on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, think, and find the answers for yourself. Is that it? Look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look forward to seeing you again. All right, fine. See ya. Shall we head back down too? इस वाला स्टोरी क्वेस्ट में प्रीमोज नहीं दिया अभी तक हमें, वरना प्रीमोज तो मिलते हैं हर स्टोरी क्वेस्ट में. Let's head to the Steambird's office. अच्छा अब देख रहे प्रीमोज. All we are doing is just for this. इतना सब कुछ बस कुछ प्रीमोज के लिए भाई. प्रीमोज बस यार, प्रीमोज प्रीमोज है भाई. इतना इम्पोर्टेंट कैसे कोई रिसोर्स हो सकता है किसी गेम का. आई थिंक वो प्रीमोज ना हो तो. Interview then, I guess. I'm very sorry, Charlotte, but my sister and I are quite busy today. I'm afraid I'll have to decline this interview. Oh, please, Lenny, only to take a moment of your time. If you would be so kind. Huh? What's happening here? I spent all night writing my piece about the Phantom Weasel, and it was
going to go to print this morning. But just as dawn broke, I suddenly received news that Caesar's fiancée, Gemma, had contacted the guards and confessed to having been the real Phantom Weasel all along. That was quick. Too late, bro. That was quick, you say? It sounds like I've got some catching up to do. Please, fill me in. Oops. Aha! My instincts didn't lead me astray. You do have something to hide. Gemma turning herself in must have something to do with Lenny's performance last night. Maybe watching my high-altitude escape trick reminded her of a better time with Caesar, and she could no longer ignore the voice of her conscience. Huh. Okay, then. Wait, no, there must be more to it. If that's all it took for her to have a change of heart, how did it take her 10 whole years? What? Oh, I remember now. You and Gemma were nowhere to be found after the show. What happened between you? Quickfire question. Where did you all go after the show? Oh, we went to the cemetery and Lenny did a private magic trick just for us. Actually, glad you mentioned it, because that reminds Paimon, guess what? Lenny started using rainbow roses in his tricks. What? I don't recall ever having received a rainbow rose from you myself. Is this supposed to mean that they're more important to you than your own sister? No, I just... What now? Oh, this is getting pretty awkward. What do we do, Traveler? Seems like this interview wasn't meant to be. Oh, never mind. There's always next time. Forgive my persistence, but when there's explosive news waiting to be found, I can't turn away. The news about Gemma has already made waves. I'll stop at nothing to get to the bottom of it all. Apparently, one of the things she said to the guard... Alright, I guess I'll leave you to continue the... Lynette? Paimon didn't mean to... Oh, really? Phew. Please, I'd be really upset. हमारे पास डोमेन्स कौन कौन से यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है वो डोमेन्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके 5 स्टार में दिखाओ इसमें क्या है. इंक्रीज एगमेंटम स्किन बाय 20%. एक मिनट, 2 सेट पीस इंक्रीज एगमेंटम स्किन. ओके ये अच्छा है. नॉर्मल चार्ज अटैक बाय 15%. भाई ये भी अच्छा है. और कौन सा डोमेन है, एक तो ये हो गया. ये तो रिसोर्सेस का होगा, चलो ये छोड़ो. ये तो चलो ये सब तो यूजनेस है, बट यार ये डोमेन भाई ये अच्छा है. टू सेट से एगमेंटम स्किन का डैमेज 20%. आई थिंक ये निकालना वर्थ इट होगा, बट अभी नहीं. अभी यूज नहीं समेंगे. और या इसी के साथ हमारे पास कितने प्रीमोज हो गए. इंडेट do we have something? लेवल 2 पे एक्सप्लोरेशन भी करनी है अभी तो. भाई ये सच में तबाही है भाई. मेरे को ये तो मैं पक्का ट्राई करना होगा इस आर्टिफैक्ट्स को. मैंने यहाँ नहीं ट्राई किया. इसके आसपास चेस्ट हो सकती हैं.
ओके ये क्या है? ये क्या करना है यहाँ पे? यू इनकाउंटर एन ओन पर्सन बाय साइड बस नहीं काउंट टू फाउंटेन। आई थिंक ये बाद में कहेंगे क्वेस्ट। इट्स टाइम टू विजिट मूनस्टेड अगेन। मूनस्टेड के पास में we got some chickens. ये डक फ्यू नहीं करते क्या? दो मैं कहूँगा ये भाग जाता है, तब मैंने फेस से शूट करने की बनी। या तो वो कंफ्यूज हो गई, उसे समझ ही नहीं आया। ये क्या है? ओके सीक्रेट क्वेस्ट आई गेस, या फिर कोई क्वेस्ट है, वंग्ड क्वेस्ट। तो अच्छी बात है, हमें फ्री रिमूव होगा तो करेंगे ये क्वेस्ट, या फिर कुछ वर्थ इट होगा तो। ओके अभी क्यों नहीं करेंगे ये क्वेस्ट।
एसेंस की हमें क्या क्या चाहिए? 3 3 4 ये 5 बार इस बॉस को मारना है हमें। नाइस। ये न्यू हार्वेस्ट मिलेगा, ये बना सकते हैं हम शायद। मॉन्स्टर कुछ ही बॉसेस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। आई मीन ये भी नहीं बना सकते हम, ये क्यों? अभी मतलब हमारे पास रेड वांग भी नहीं है ना, बस एनीमो है। ओ भाई आई गेस मुझे हम एक कंडक्ट ट्राई करते हैं, उसके बाद यंगान के ये, उसके बाद हम जाते हैं वापस। हाँ इमेज भाई कहाँ थे यार तुम? अब इसकी इवेंट करने का टाइम आ गया तो तुम आ गए हो। कहाँ थे सुबह से? पता प्रभव ने कितना मिस किया तुम्हें? प्रभव ने इतना मिस किया तुम्हें, तुम कहाँ थे? प्रभव मिस कर रहा था भाई तुम्हें, कह रहा था भाई इमेज कहाँ है, मेरा इमेज कहाँ है, ऐसे गया था वो। और जीरो भी पूछा था तुम्हें, जीरो भी पूछा था कि इमेज भाई कहाँ है। प्रभव की स्ट्रीम में एंड होने के बाद कहाँ थे? क्योंकि वो मेरे पास आके पूछ रहा था इमेज आया क्या, मैंने कहा नहीं। यार इमेज को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? क्या भाई यार इमेज ही तो एक बंदा है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया इमेज ने? क्या यार इमेज ने यार ओ एक सेकेंड मैंने कुछ एक सेकेंड मैंने गलती से फोकस नहीं किया चैट देखने के चक्कर में। सॉरी प्रभव, यार प्रभव मैं भूल गया यार, ऐसा स्ट्रीम पे नहीं बताना था यार सबके सामने, सॉरी। ओ भाई मैं किसी की भी आईडी यंगान नहीं निकलेंगे है, अब मेरे किसी भी आईडी में यंगान नहीं निकलेंगे। अरे वो प्रभव व्हाट इज दिस भाई, ऐसा क्यों? झूठ क्या है भाई तू? प्लीज कुछ अच्छा दे देना यार प्लीज। फिंगर क्रॉस करेंगे प्रभव, तेरा कर्स ऑफ बाइंडिंग यहाँ तक ना आ जाए। HP देगा यार शिट भाई, HP नहीं चाहिए यार, मेरे पास HP पड़ा है। डैम भाई प्रभव गायब करो प्लीज। प्रभव दिन में गएगा भाई।
बाबा वेट 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 जाइए मत, मेरे को कुछ पूछना है तेरे से। मैं तुझे कुछ शो करने जाऊँ, रुक जा 1 मिनट। पहले मुझे मॉन्स्टर जानते हैं, एचपी की एचपी तो है अपने पास। मॉन्स्टर एचपी इंक्रीज करनी है थोड़ी सी। ये क्या है यार? मेरे पास ना 3 स्टार मेरे पास 3 स्टार वो है जो कि मैं इसको दे सकता हूँ यंगान को। मेरे पास 3 स्टार वो है जो मैं यंगान को दे सकता हूँ, वही पूछना मुझे। रोबोट भाई मैं प्रभाव से प्यार करता हूँ। प्रभाव भाई, भाई प्रभाव भाई नाइस। मेरे पास 3 स्टार वो है, मैं शो करता हूँ। 1 सेकंड में सेफ हो जाओ, थोड़ा जुकाम हो जाएगा वरना बारिश में। प्रभाव है ना तू बताने के लिए? यंगान कहाँ है मेरी? यंगान अबे कहाँ है ये? मेरे पास वेपन्स में ना ऑप्शंस कम है, बट मेरे पास अभी मैंने अभी नोटिस किया है मेरे पास ये वेपन में ऑप्शन है या है इसमें 34%। इसमें अटैक है जो कि यूज करने से महंगे। क्रिट डैमेज increase damage against weak spot by 48%. Charge attack hit a weak point dealing additional 125% damage. Attack damage as crit damage can only occupy once every 10 seconds. मेरे पास 2 ऑप्शन है देख, एक तो ये है R2 और एक R5 ये है। इसके लिए मुझे जो चाहिए डोमेन्स वो नहीं है मेरे को अभी नहीं। संडे मतलब कल तो मैं कर दूंगा, अगर मेरे को तू कहेगा तो। इसको अगर तू कहेगा अपग्रेड करने के लिए तो मैं कर दूंगा। प्रभाव दिस वन और दिस वन, या फिर मैं इसी पे स्टिक करूँ इन दोनों पे। भाई माइनक्राफ्ट नहीं खेलते हो इमेज भाई? अभी इसका 2 दिन तक और स्ट्रीम होगी जेंशिन की लगातार, क्योंकि जेंशिन का अपडेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम माइनक्राफ्ट पे वापस आ जाएंगे। कंपेयर अब बता तू क्या सीखेगा? यहाँ पे मेरे पास वेपन्स के और भी ऑप्शन होंगे जो हम क्राफ्ट कर सकते हैं, पर क्राफ्टिंग में भी देखेंगे हमने। लेट मी सी, वो फिजिकल डैमेज बोनस हट जा भाई। बेस अटैक परसेंटेज नहीं, बेस अटैक परसेंटेज वो कोई वो नहीं है ना अपने पास, ये है ना। ये सबसे प्रॉब्लम कौन सा से हैगा यंगान के ऊपर? क्योंकि मेरे पास 4 स्टार वेपन है नहीं, मैं 3 स्टार में ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। 18 ये देखिए नेवंग 20 है बट 18 दे, नेवंग 20 है बट 12 दे है। इसका बेस अटैक ज़्यादा है, इसका बेस अटैक कम है। हमें बेस अटैक से फर्क ही नहीं पड़ता वैसे भी। नायोद भाई समझ आया मैं क्या था? नहीं भाई नहीं समझ आया।
11 मेरे पास होगा एक ही गन वाला, ये भी मेरे पास नहीं है। रेस्क्यू आई गेस मुझे स्टैंडर्ड बनने पे वेपन निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें तो मेरे को प्रिमोज यूज़ करने पड़ेंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं, शॉप में देखें कोई है क्या वेपन अपने पास एक्सचेंज में। क्या है ये? वो अटैक परसेंटेज अटैक देगा यार ये इस पे। डैमेज की वो नहीं है अपने पास भाई। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस भाई। एंड एक बार हिस्ट्री चेक करें इसकी कितनी है। टू 3 4 5 मतलब 23 की पिटी है। एंड इसमें 0 भाई। जोंगनी निकालने के सिवा कोई और कैरेक्टर पे फोन नहीं कर सकता मैं। बैनेट का चाहिए था मुझे, बट मेरे हिसाब से बैनेट के चक्कर में मैं अगर कोई मोज वेस्ट नहीं कर सकता यार। बैनेट चाहिए था मुझे, बट अभय भाई तो अभय भाई हैप्पी बर्थडे इन एडवांस अभय भाई। यार प्रभाव बदल गया भाई। प्रभाव को तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है भाई। प्रभाव को तुम्हें भी कोई नया ढूंढ लेना चाहिए। प्रभाव अब तुमसे प्यार नहीं करता भाई। प्रभाव ने तुम्हें धोखा दे दिया इमेज भाई। अबे भाई प्रभाव इस चैट में नहीं रहा। प्रभाव भाई प्रभाव तुम पता है प्रभाव लाइव स्ट्रीम में जब आए ना तो उसको यही कहा को प्रभाव जब प्रभाव लाइव स्ट्रीम करता है तब उसको बताओ तो सही तुम कितना केयर करते हो प्रभाव की। तभी तो वो तुम्हें उसे जिताओ, उसे समझाओ कि प्रभाव कि तुम प्रभाव की कितनी केयर करते हो, तब प्रभाव तुम्हारी केयर को समझ पाएगा। जब भी वो स्ट्रीम करे जाओ स्ट्रीम पे स्पैम कर दो प्रभाव, ये स्पैम कर दो इमेज कि तुम प्रभाव से शादी करना चाहते हो। कौन बचा है? सब एनिमी मर गए।
प्रभव को जिता दो भाई, नाइक कर दो यार जो भी देख रहे हैं। बट अभी तक हम स्ट्रीम एंड ही करने वाले थे, बट नाइक कर दो। और हाँ, प्रभव को तुम बता दो यार, तुम अगर तुम प्यार करते हो प्रभव से तो बता दो। इमेज, उससे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रभव को घर से उठा के आ जाएंगे, डोंट वरी। प्रभव प्रभव अभी स्ट्रीम जब करेगा ना तब करना ये उसको। जब प्रभव मॉर्निंग में स्ट्रीम करेगा तो प्रभव से कहना, प्रभव आई वॉन्ट टू मैरी यू। वो कितना भी मना करे कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्या तो ये झूठ है, तो तुम कहना नहीं झूठ नहीं है भाई। उसको समझा दो कि प्रभव नहीं, तो उसे बताओ प्रभव कि इमेज भाई कि प्रभव के बगैर तुम नहीं रह सकते। बताया पर प्रभव ने मना कर दिया। आगे उसके मना करने से क्या होता है? जब तक तुम्हारा मन मना ना करे करते हो, ट्राई करते हो। कहाँ है प्रभव? अभी स्ट्रीम नहीं कर। प्रभव ऑनलाइन होता ना, मैं उससे कहता भाई कि कहेंगे बेस्ट इमेज। प्रभव कहेगा भाई तुम सब मेरा पीछे छोड़ दो ब्रो। प्रभव कहेगा हम दुखियारी आदमी है भाई, हमारा पीछे छोड़ दो तुम सब। चलो भाई, इमेज भाई बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट इमेज भाई। मैं प्रभव से बात करता हूँ तुम्हारी शादी की, डोंट वरी। नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा भाई वो? प्रभव कैसे नहीं मानेगा उसको? बाय बाय। तुम्हारी शादी की बात करूँगा मैं प्रभव से, डोंट वरी। तुम्हारी शादी होगी प्रभव से, डोंट वरी, टेंशन मत हो तुम। नहीं मानेगा उसको हम उठा के उठेंगे घर से, उसे मनवाएंगे कि तुझे करनी है शादी तो कर, बट सिर्फ इमेज से, किसी और से नहीं होगी तेरी शादी। वो मानेगा, कैसे नहीं मानेगा वो? ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय प्रभव। इमेज भाई, प्रभव कहने जाता हूँ, बाय बाय।